Hello everyone, thanks for joining the stream. मेरा नाम है नीलेश जेटली and we are we ready? I don't know. Are we ready for the return of the one and the only Ranveer Allahbadia? I have no idea. All right, I'm messing around a little bit. It's a short video. आज की stream भी छोटी होने वाली थी, so I thought let's not do too much today. ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेंगे. We have to react to this. We have to review the Let's Talk video, and I always love when यूट्यूबर्स मेक दीज लेट्स टॉक वीडियोज़. जो पहली चीज़ मेरे माइंड में आती है, लोगन पॉल की अपॉलॉजी वीडियो आती है आफ्टर द जापनीज थिंग. आई मेड अ सिवियर लैप्स इन जजमेंट. सो इट्स ऑलवेज फन टू सी how they word things, how they act, how they try to twist it into something positive. Because you know they're going to. But before that, I do need to change something, a little thing. Hi Andrea Gale, thanks for joining the stream. Did you read my DM? Oh, maybe I did not. I'm sorry, dude. Yo, what the fuck? No Shadab, no people. यार पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ, रुको तुम. अरे बताता हूँ. Yeah, that's good. I was just trying to fix a filter on the audio. I didn't read your DM. Hold on. Let me see. Wait. तूने अभी अभी करा क्या? ओके, अभी ये तो तूने लंबा DM करा, तो रुक जा. या तो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा. Unless it's important, so do let me know. क्या कह रहा था मैं? हाँ, कल ना मैं स्ट्रीम करने के थोड़ा सा लेट सोया था. थोड़ा सा क्या, मैं ज़्यादा ही लेट सोया था. आई थिंक मैं 3-4 बजे सोया था. एंड आज संडे था, तो आई वॉज थिंकिंग कि हाँ थोड़ी सी लंबी नींद ले लूँगा. आज जिम भी नहीं जाना, एवरीथिंग इज़ फाइन, इट्स ऑल गुड. तो थॉट कि हाँ आराम से सोऊंगा. बट मुझे सुबह सुबह मम्मी ने, सुबह सुबह तो नहीं बट 8 बजे करीब मम्मी ने उठा दिया. एंड नाउ आई एम स्लीपी. सो या थोड़ा सा एनर्जी का सीन है. हाँ ओके, हाँ ओके, बाद में पढ़ लेना. ऑलराइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. Yes, anything is important as long as it's not coming from Sudeep. Thala is on the chase. 19 balls में 46 run. Oh really? Oh my god, I cannot even. Hold on. Shit. क्योंकि मैं चला भी नहीं सकता ना स्ट्रीम पे तो. 1 run. Oh, that's all we can do right now. All right, because stream पे चलाऊंगा तो it's like illegal copyright shit. 45 runs in 18 balls. I don't know. Things are not looking good for CSK these days, apparently. And people hate Thala right now. First, yes, Parth, always. You always are. Of course. अब यार, this is one of the things with cricket. भाई, एक ओवर के बाद जो ब्रेक होता है ना, especially when you're involved. I love it when Thala disappoints. I think you try to love the most horrible things high and dry. Is that true? The only reason you love it because it's horrible, isn't it? 43 runs in 17 balls to win. Does anyone know वो क्यों हुआ था, जो पूरा सीन था 9th नंबर पे बैटिंग करने वाला? Like they got a lot of hate for it, and especially धोनी. नहीं, I hate उनके fans तो अच्छा लगता है. Why do you hate their fans? I don't get it. I don't like RCB fans because they call themselves RCB fans. They are just Virat Kohli fans, and there is nothing wrong with it. Virat Kohli is absolutely a great player. He deserves all the fans he has. But then they call themselves RCB fans. Most of them are just Virat Kohli fans. So that's why I don't like them. Maybe the same thing for Thala and CSK, maybe. Thala वॉशरूम चला गया था. है? थाला मैच खेल रहा है, वही बड़ी बात है. जब जितवाए भी वो. True. And to be honest, to be fair, who really gives a fuck about IPL? मतलब I like when players take retirement सही वक्त पे. I think some people still say Dhoni took a long time, but maybe he did. I'm not sure. I don't know that much about cricket. IPL, मैं तो कह रहा हूँ भाई, खेलो जितना टाइम खेलना है खेलो, बढ़िया है. Because nobody really cares. It's a domestic club thing, domestic club tournament.
इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं ऑफ कोर्स, बट ठीक है, लाइक आई डोंट नो, आई कुडंट केयर मच. या थाला स्ट्राइक रोटेट कर रहा है. ऑलराइट, वो भाई वही तो बात है ना. द क्वेश्चन इज कि what happens to the confidence, like for the players and probably for Dhoni as well, because भैया इतना गाली जब पड़ रही है पूरी दुनिया से, तो that does fuck with you, right? 14 balls में 40 रन. ला 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 ला. क्या रे जानम, thanks for joining the stream. क्या चल रहा है? Now we cannot do anything. That's another thing with cricket. Not with cricket, with every sport. अगर तुम देखने बैठे तो you can't really do anything else, can you? Current rate, I don't think CSK is going to win. Or I'm calling it. I don't think they're going to win. I'm just saying. I would like them to win. It doesn't seem like it. क्योंकि भाई people, and including me, we are still in love with the image. Alright, the image, the memory, the legacy. But we need to realize in front of us we have men. Indian soccer is the best. कौन सी ISL वाला ये कि डोमेस्टिक के किस टाइप की कह रहा है? एंड व्हाई डू यू कॉल इट सॉकर? इंडिया में सॉकर कोई कहता भी नहीं है, अमेरिकन्स कहते हैं सॉकर. शिवदीप, व्हाट अ फकिंग वाना बी डूड. 12 पे 39, हा. 12 पे नहीं, 13 पे 40. अच्छा ओके, एक सेकंड, मेरी इतनी पीछे कैसे चल रही है? द फक. आई हाईली डाउट दे गोना विन. लोग कह रहे हैं 2 छक्के इस ओवर में, 2 नेक्स्ट में, फिर उसके बाद इजी टू विन फॉर CSK, ट्रस्ट धोनी. 14 सेकेंड्स अगो. भाई इतने तो बच्चे नहीं हैं, 3 ओवर 2 ही बचे हैं भाई. भाई आज पहली बार गाड़ी चलाई. अरे नाइस यार, नाइस. See now this has caught my interest. I don't know what to do about it. I was just gonna straight up watch this. Why did you tell me? The match was going on? I didn't even know. I don't even care about IPL, but once you get invested, you just get invested. La. Because I was seeing that. No, you were watching the stream and only this fucking stream, nothing else. You don't watch anything else. You just watch the stream. Do you get it? Better accept it. And now we've got to wait for 2 fucking hours for the next over to start. So yeah, that's always nice. And by the way, Hendra, am I supposed to read your DM out loud on the stream or not? I'll give you a visual match ke Thala just scratched his crotch. He says 4. It's a chokka? Okay. 35 in 11 balls to win. It's not likely, guys. I'll put another DM out loud. Alright. Damn. Yeah, I wish I could just fucking watch the match on stream, but कोई बात नहीं. और यार तुम्हारी चैट कैसे पहले आ रही है मेरे पास? गूगल के सट्टा लगा रहा. नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था मैच हो रहा है. मैं तो स्ट्रीम पे आया, मुझे बता दिया इन लोगों ने. क्या हाल है? 16 थैंक्स फॉर स्ट्रीम. हाउ द फक इज योर चैट फास्टर देन द... आई डोंट गेट इट. आई थिंक कितने आउट हो गए? 5 आउट हुए ना. I think he needs to take big shots and then it's not gonna go well. Catch out probably. Catch out के okay. जन्नत का म्यूजिक चलाओ पीछे. तेरे ही नहीं वाली नहीं, पहली वाली जन्नत. वो हाँ ओके. लास्ट ओवर में दूसरी बॉल में थाला गेट्स आउट. 19.2 पे थाला गेट्स आउट. Trying to go for a 6. I don't know if he's gonna be bowled or is it gonna be a catch.
सेकंड बॉल ऑफ द लास्ट ओवर, मैं बेटॉन आ रहा है। ओ वाह, ओ भाई साहब, ओ भाई बस तो बड़ा रिस्की आदमी है रे। इतने कट्स कहाँ से आ रहे थे तुम्हारे पास? अब मेरा थोड़ा सा इन मैच चल रहा है, जो मेरा स्कोर और तुम्हारा जो है। भाई मैं तो ये आईपीएल की सारी वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम कर लेता। हमको किसी ने कहा ही नहीं। डू पीपल डू क्रिकेट की वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम्स? बिकॉज लाइक आई नो आई वॉच MMA, UFC, उसकी तो करते हैं। But they're giving away a lot of runs as well. हाँ बहुत. Oh. So what are people saying about this? Right now, let's see. Yeah, but it feels like then I'm stealing their content live. वो भी. पहला छक्का है क्या? जी हाँ, पहला छक्का महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से. Oh fuck! Really? Shit! I missed it completely. और भाई कितना चला रहा भाई, बहुत ही गंदी आवाज आ रही है इसकी तो. छक्का लगा दिया, हम की जरूरत है. हाँ तो भाई लोगों कहाँ हैं आप लोग? गेंद स्लॉट में थी, ऑफ स्टंप पर थी, सामने उठा के मारा. अच्छा दूसरी साइड जडेजा है. ऑन के बाहर 6 रनों के लिए महेंद्र सिंह धोनी सीधे साइड. Oh, they're both hitters. They're both hitters, right? Jadeja is a hitter if I'm not wrong. But we don't. You don't have balls. Oh my god. They always make it interesting. That's the thing. Okay, you gotta support a team. आपकी स्ट्रीम में व्यूअर्स आएंगे, तुम बोलोगे I don't care who wins, IPL is shit. So do you think it's a coincidence that there's only 3 people watching the stream right now? I mean, of course. Who is this guy supporting? करारा प्रहार करते हुए माही, अभी भी 80 मीटर लंबा छक्का ये. वहाँ पे हमें स्क्रीन पे जो है मलाइका अरोड़ा काफी नाखुश दिखती थी. अगली गेंद और छोटी गेंद पुल किया, इस बार स्क्वायर लेग की तरफ, बॉल पीछे फील्डर होने चाहिए. जी हाँ, एक खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन और मिल जाएगा माही को. 156 5 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स. भाई हिंदी कमेंट्री को क्यों बोलते हैं भाई? ये तो जो स्ट्रीमर्स है वो भी यही कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट डिफरेंट. थाला फॉर रिजन. अच्छा तो मैं देख नहीं रहा. भाई कमेंटेटर्स को क्यों बोल रहे हो? 20 runs. It's possible. It's very likely now. 20 runs. But that's the thing. When it's more likely, then you're more likely to take that risk, and then you're more likely to get out. So. आई थिंक मैंने कोई क्लिप देखी थी जिसमें विराट कोहली वॉज टॉकिंग अबाउट धोनी एंड ही वॉज सेइंग के लाइक आई ऑलवेज प्रेफर कि 1-2 ओवर पहले ख़त्म हो जाए मैच, बट उनका ये होता है कि ही वांट्स टू टेक इट टू द लास्ट ओवर एंड बिल्ड अप दैट प्रेशर. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. कई बार किया है, 6 गेंदों में 20 माही ने कई बार फिनिश किया है. ऐसे मुकाबले याद दिलाने की आवश्यकता. इट्स वेरी लाइकली नाउ दे माइट एक्चुअली विन. और दर्शकों में जोश भरता हुआ और शोर भी. हाँ IPL is IPLing. Boys, leave this boring live stream. What's up, Joffrey? होता हुआ इस छक्के के साथ जडेजा ने बना लिए अब 21 गेंदों में 31. Oh, Jadeja also hitting. सिर्फ 20 रनों की दरकार. अच्छा नहीं, wait what? चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले को जीतने I thought इसकी स्ट्रीम मेरे साथ चल रही है, बट कोई बात नहीं. के लिए और स्ट्राइक पे होंगे महेंद्र सिंह धोनी. तो अब आप समझ लीजिए कि जो गेंदबाज आखिरी ओवर गेंदबाजी करने आएगा उसके अंदर कितना दबाव होने वाला है. Here we go. तो दोस्तों आपसे मैं लगातार कह रहा हूँ 2000 लाइक्स का मेरा टारगेट है. और लाइक करो भाई की यार. इस वक्त हमारी कमेंट्री को सुन रहे हैं, अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है और आप अपनी टीम को भाई साहब, I don't even care about cricket. I'm feeling this. That's the whole point of sport. That's the whole fucking point. It's fucking amazing. And it's a single run. कमेंट भी कर रहा हूँ, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलने का. लाइक्स का टारगेट हमने 2000. Now Jadeja on strike. आप लोग पता नहीं कितनी सुस्ती मचाए हुए हैं, अभी तक 1000 भी नहीं पूरा कर पाए हो. मुकाबला समाप्त होने की दशा में आ गया है. वाइट बॉल थी, नो बॉल थी, क्या थी ये? पूरा कर दो. कम ऑन गाइस. भाई बॉल क्या थी ये तो बताओ. एक ठेका दिखाने की बात है. भाई गलत बात कर रहे हो यार तो तुम. हेलो साहित्य सिंह. फटाफट से करो. रिजल्ट फोबिया ले लिया आपका नाम. ओरिजिनल फोबिया तो नाम नहीं होगा. अरुण पवार नहीं लिया, कैसी बातें कर रहे हो? सुना करो. कम ऑन डूड, कम ऑन. लेट्स जस्ट नंबर माही
Let's just start already. Come on. Let's just go. Tala out. Was I off by one ball? Are you fucking with me? थैंक यू सो मच। लाइक्स का संख्या 2000 का टारगेट है दोस्तों, 2000 पे फटाफट पहुंचाओ ना। और यहाँ पे पूरे मैदान में सन्नाटा। महेंद्र सिंह धोनी हो गए आउट और करके चले गए टाटा। अब पहली बॉल पे धोनी हो गए हैं आउट। भाई लोग, महेंद्र सिंह धोनी हो गए हैं आउट। मैं क्या ही कहूँ, कैसे कैसे? मतलब Was it a bold? कहना A मुश्किल है। catch? रामू गुर्जर जी ले लिया आपका नाम, अंकुर राजपूत आपका भी नाम ले लिया। Was it a catch? Was it a bold? What happened? Catch out. I was off by one ball. Oh my god. Oh my god. And उससे पहले एक बॉल वाइड थी ना, वाइड या फिर नो बॉल में से कुछ, बिकॉज आई जस्ट सॉ राइट देयर एक रन पड़ा था. Oh, I know. Not only that, I was off. I was actually exact. It's just that it wasn't the legal second ball. It was just the second ball. Oh fuck, man. जन्नत का म्यूजिक यार भाई साहब. अब but they're gonna take a fucking break now. I don't give a shit. All right. Oh no, they're not taking a break. Okay, single Jadeja on strike. Still they have a chance. 3 sixes and 4 balls. I highly doubt it. अब कोई पैन आएगा और बोलेगा मैं ₹1 लगा के 3 करोड़ जीत गया. तो नहीं गया. 5 बॉल पे 4.5 मारने पड़ेंगे. डिस्कॉर्ड देखो जल्दी. ऑलराइट. यू मीन डीएम? ओके, आई डिड द डीएम. होल्ड ऑन. नहीं, डीएम कह रहे, क्या कह रहे हैं? अच्छा नहीं, ये कह रहे हैं. What the fuck is this, dude? What are you sending me? I don't even know. Fucking hell. Acha, oh shit. Okay, I thought it was a weird thing you were sending me. This guy caught Dhoni's catch. Dhoni or dad, thala kebab. भाई कितने चूतिया हैं लोग यार. कितने चूतिया हैं ये लोग कितने चूतिया हैं भाई. These guys are fucking idiots. Alright, they just lost. Technically. Oh my god, these guys are fucking idiots. The fans, I mean. No, not DM. ये लोग 1 मिनट में गाली लिखने पहुंच गए. हाँ भाई, क्या करेंगे और क्या करना, क्या और. ठीक है, yeah, that's not gonna happen. And Jadeja is not even on strike, is he? I mean, yeah, it's not happening. Don't worry, guys. My fucking foot. भाई वो बंदा ये सही बता रहा था यार. थाला कर गए हैं टाटा. Thala lost his element. Should retire. He has retired. What do you mean should retire? He is retired. He's playing this domestic international players league. I mean, it is considered domestic league, right? Or, well, no, it cannot be domestic league. From IPL, who gives a shit? Nah, make the money, dude. Like, he's IPL में हार के जीत के who are you really letting down? एक छक्का किसने, जडेजा मारा? किसने मारा? 2 बॉल पे 11 रन. किसने मारा छक्का? Who's on strike? How do I check it? The other guy? All right. Yeah, but now he cannot. He can't even take a single. He has to go overturn. Click on it. Click on this. Oh, there you go. S. Sharma. What do you mean overturn? Alright guys, I have अच्छा ओवरटन नाम है उसका भाई. फक, शर्मा में बॉलर पड़ रहा था. Okay, they lost. Of course they did.
ऑलराइट, हैप्पी ना? चलो, win probability is updating. Oh, okay. Yeah, you never know, there might be no ball. Fuck off. Anyways, हो गया बहुत. इसलिए मैं स्ट्रीम का भाई टाइटल वगैरह नहीं डालता, मैं डालता कुछ और हूँ, हो कुछ और रहा होता है. थारा बॉल खा गया. भाई हर बात पे गाली. ज़ीरो लिखाएगा. अच्छा, ओके, फक इट. 7 रन से हारेंगे. ऑलराइट, चलो कोई बात नहीं. वो तो पिछले पहले भी खुश थे कि 50 से हारे हैं. ओह, मलाइका. Thara for a reason. All right, so much Dhoni hate all of a sudden. I think the fans are retards. Fuck me. Okay, now let me get into the fucking zone. I'm gonna take a fucking moment. Riyan Praki search history wala can't. I think he was searching who? Sara Ali Khan hot and Ananya Pandey, I think, if I'm not wrong. He's that guy, I'm assuming, by the context of her comment. By the way, let me also read the DM. सच्ची में 7 रन से हारे. Alright. Okay, what's the DM? कुछ लोगों का इतना क्रेजी वर्क एथिक कैसे होता है? लाइक आई हैव सीन पीपल, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है. वेट, होल्ड ऑन, आई शुड. कुछ लोगों का इतना क्रेजी वर्क एथिक कैसे होता है? लाइक आई हैव सीन पीपल, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, दे जोन आउट एंड फोकस ऑन वर्क. आई न्यू एक फ्रेंड जिसकी काफ़ी साल की रिलेशनशिप खत्म हुई एंड शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स मोर डेडिकेटेडली. लाइक जैसे स्ट्रेस में लोग बिंज ईटिंग करते हैं, या जैसे मैं को भी मेन जैसे लगते हो तुम लोग हैं. मोहित क्या हाल है? थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम ब्रो. जैसे स्ट्रेस में लोग बिंज ईटिंग करते हैं, या जैसे मैं गेमिंग में एस्केप करता हूँ, कुछ लोग वही एस्केप काम में करते हैं. आई एम डिलिबरेटली राइटिंग काम में एस्केप करना, विच साउंड्स ऑक्सीमोरॉनिक, बट आई थिंक ऐसे लोग काम करते हैं प्राइमरीली नॉट बिकॉज दे थिंक कि वर्क विल मेक देम सक्सेसफुल / इंडिपेंडेंट, बट बिकॉज काम करके दे विल नॉट ओवर थिंक, नॉट गिव टाइम to themselves that will keep them sane, and it will prevent them from doing something stupid like scrolling addiction, forming bad habits. How the fuck are such people so disciplined? Wrote this here. Stream chat में continuity टूट जाती है. Alright. राम राम भाई. आज गेम प्ले ठीक था मेरा. अच्छा, क्या क्या कर, अच्छा तुम्हारे को लगा वर्क एथिक. जहाँ तक वर्क एथिक की बात है, मुझे ना ये चीज़ थोड़ी सी अब इशू दे रही है, बिकॉज नाउ वेयर डू आई गो विद दिस? डू आई गो द श्वेताब राउट? Because it is the simplest way to explain things, the Shwetab route. There are some people who are highly conscientious. There are some people who are not as neurotic. And these are pretty good traits if you want to be able to have the ability to just focus in on your work. To be honest, I am none of those things. I am like on average neurotic. At the same time, I am very low in conscientiousness. I have zero discipline. But हाँ, जब मैं थोड़ा सा यंग था, जब मुझे ये चीज़ें ज़्यादा बॉदर करती थी, आई यूज़ टू हैव अ सिमिलर थिंग. आई यूज़ टू ड्राउन माई सेल्फ इन वर्क, एंड दैट एक्चुअली डिड हेल्प मी. दैट डिड. अब to be honest, I just feel it's more like you gotta get yourself up and going with things. अब the thing is, मैं काम ही ऐसा करता हूँ जिसमें और लोग involved होते हैं. When I'm shooting, when I'm doing this, when I'm doing that. So there's a team most of the time. So I have to engage with people. I have to engage with work. I have to talk to people. So for me, it really did work back in the day. Now I use it in a different way. अगर मुझे कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से इम्पैक्ट करिए या कुछ भी करिए, सो आई टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर इट मोर, एंड आई थिंक इट हेल्प्स मी एज अ राइटर. बट अब नॉर्मल उसकी बात करूँ, अगर मैं ये निराटिक और ये सारी चीज़ें हटा के बात करूँ, तो
I am not sure if it's oxymoronic or not. What I am a little confused in is कि well, when you say they drown themselves in work and how they are so disciplined, because these are two different things. एक तो हो गया कि बंदा और बंदी is drowning themselves in work to deal with these situations or to not deal with those situations. एक हो गया कि हाँ वो इंसान इतना डिसिप्लिन है ही भाई, उसकी गांड भी फट जाएगी ना किसी और एस्पेक्ट में उसकी लाइफ के, तो वो ये काम तो करेगा ही डिसिप्लिन से अपने बाकी के काम जो हैं. So yeah, if you can make a clearer statement on that. मैं एक DM भेजता हूँ, वो स्ट्रीम पर पढ़ के दिखाओ. ऑलराइट. बट जैसे बोल रहा है तो पहले अलग से देखूँगा मैं. Who is this Joffrey? Someone in Discord thought as well. What do you mean? अच्छा, by the way, Joffrey is OG of the stream, no cap. RIP क्यों कह रहा भाई? But yeah, he is the OG, that's true. Joffrey was the most active viewer of the stream and also on the Discord, but he left. Hi, Dry and Mighty know you. Okay. Oh, Ranveer Allahbadia, let's go. There's most okay. Let's get ready. Let's get fucking ready because I got into fucking different things. शुरू में आते एक तो क्रिकेट शुरू हो गया, उसके बाद नीलेश तेरी डिक्टेटरशिप की वजह से fuck you Shubdeep, you have no fucking clue. Alright. ना मैं पास ना तूने कैरी कर दिया. अरे यही रोता रहा तुम. Alright. Let's get. I'm interested. And I was interested in this. Now you've got me all distracted and thinking about different things. I was interested in this. I still am. Let's see how he takes it. I don't have high hopes. I feel like there's going to be some... Okay, prediction time. I think there's going to be a lot of owning up to your shit. But that is like pretentious owning up to your shit. And it's like, but here's how we're going to grow better from this. मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होने वाला है. Can I be more specific than that? I mean, that's specific enough, right? I think so. There's more to say, but not right now. Thank you for your patience. I like the fade in text in black screen. नमस्ते दोस्तों. पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सारे सपोर्टर्स को, सारे वेल विशर्स को थैंक यू. आपके पॉजिटिव मैसेजेस ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि ये फेस बहुत मुश्किल था. खुलेआम ऐसे वायलेंट थ्रेट्स, इतना ज़्यादा ऑनलाइन हेट्रेड, इतने सारे मीडिया आर्टिकल्स, इतना कुछ देखा, और उस सबके बीच आपके DMs ने हमें बहुत सपोर्ट किया. जितने TRS के गेस्ट्स ने रीच आउट करा, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, उन सारों को भी थैंक यू. जिंदगी के सबसे Oh, okay. All those fucking dickheads are bitches. All those fucking dickheads are absolute fucking pussies. If you reach out to this guy behind the scenes, oh, you just, I'm there for you. That doesn't fucking mean anything unless you're saying that publicly. You're a public personality, I'm assuming, if you've been a guest on this podcast. So if you're there for the guy, then you have to be there for the guy publicly. Because personally, if you're just a guest on the podcast, if you've been a guest a couple of times on the podcast, I'm there for you. It's not going to do anything for the guy. But a lot of people standing up for the guy might actually fucking help. So, and these things are so phony. भाई उस बंदे की फटी पड़ी है, ठीक है, पूरी दुनिया से उसको गालियाँ पड़ रही हैं, उस बंदे की फटी पड़ी है. उसके बाद अगर तुम आराम से प्राइवेट में कहते हो ना, but I still like you. This is just phony. This is just fake support. You're trying to take the credit of being a supporter. Personally, you're still generating your goodwill. At the same time, you're not really doing any real support, are you? So I hate that. I absolutely hate that. Like, conceptually, I hate that. 48 seconds in. My guess is, अब मैं अच्छा बच्चा बन के podcast करूँगा. I will be more vigilant. It's going to be the most generic apology, I feel. लो मोमेंट्स में आपको ये पता चलता है कि आपके रास्ते में सिर्फ सफलता आपके साथ नहीं चलेगी, आपको फेलियर का सामना करना होगा. इसलिए आज मैं बस दिल की बातें आपके सामने पेश करूंगा. Nope, not true. That's not true. I see it on your face, Ranveer. That is not true. I see it in your face. You have thought about shit a lot. You've written shit a lot. It's not dil ki baat. It might be man ki baat. Might be. स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने सालों तक हमें हेल्प किया. हर हफ्ते 2-3 वीडियो रिलीज किए पिछले 10 सालों से, ब्रेक लिए बिना.
ये एक फोर्स ब्रेक मिल गई, ठहराव के साथ जीना सीखा। ये जाना है कि इतने सारे भारतीय हमें परिवार का एक सदस्य मानते हैं, इतने सारे लोग मुझे बेटा मानते हैं, इतने सारे लोग मुझे एक भाई मानते हैं। Okay, I mean, all right. I can imagine a hater going, yes, हाँ मैं भी तो रिपीट मानता हूँ. I'm sorry, I just, all right. मेनली उन सारों को सॉरी। आने वाले 10, 20, 30 सालों में जब तक भी कंटेंट क्रिएट करूंगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं ये समझाऊं कि मेरे शोल्डर्स पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर मुझे परिवार का सदस्य मानते हो, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतने सारे बच्चे भी हमारा शो देखते हैं। ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरा वर्क कैरी ऑन करूंगा। And see, that's another thing. That wasn't your show. That wasn't your show. जिस शो पे तुम थे, that was behind a paywall for adults. बच्चे तुम्हारे शो देखते हैं, that is absolutely true. आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू। मेरे साथ जो 300 लोग काम करते हैं, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फैमिलीज की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस टीआरएस के रीस्टार्टिंग फेज में जितने लोगों ने अब तक हमें सपोर्ट किया, उन सारों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो आपके दिल में मेरे लिए प्लीज़ जगह फिर से बनाना, एक और चांस देना। मुझे कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा प्यार है, पॉडकास्टिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, हमारे देश की हिस्ट्री कल्चर एक्सप्लोर करना, ये मेरी पैशन है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टू माय जॉब। मुझे बस वही करना है। जब इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी ना मेरी मेंटल हेल्थ, तब मेडिटेशन, साधना, प्रेयर की वजह से ये भी पता चला कि एंड में आपके साथ सिर्फ ऊपर वाला है। इसलिए इस फेज़ को भी मैं एक पनिशमेंट की तरह नहीं देख रहा हूँ, एक लर्निंग की तरह देख रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देख रहा हूँ। अगर ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है अब तक, तो इस फेज़ को भी मैं एक ऊपर वाले का तोहफा ही मानता हूँ कि इट केम इनटू माय लाइफ फॉर द सेक ऑफ माय ग्रोथ एंड माय ट्रांसफॉर्मेशन। अब आई एम जस्ट गोइंग टू लेट माय वर्क स्पीक। मैं बस अपने काम को बात करने दूंगा। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरी पूरी। This took a darker turn. This took a darker turn. This whole controversy somehow took a darker turn in my mind with this video, because now the whole Ranveer was in, he has dug it much deeper. The only reason पूरी दुनिया को दिक्कत हुई थी रणवीर के उस क्वेश्चन से was because he created a persona online कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, और दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ऑनलाइन जो हम देखते हैं वो तो सच होता है, जो टीवी पे दिखता है वो तो सच होता है, which is obviously not true, but people think that, so that's fine. But just by making this video in this sense, he has dug that hole much deeper. This is worse. This is absolutely worse. Now there's nothing else he can do apart from this box he keeps shoving himself in, and that might be great for his business. As a creative I'm not sure, क्योंकि उसको पहले से ही पता था. All of this he knew already. He knew what he was doing. He knew his persona. My theory is still this कि भाई उसने देखा था समय के शो में पहले भारती एंड हर हस्बैंड वेंट, एंड वो एक टीवी पर्सनालिटी हैं, उन्होंने भी जाके ऐसी अश्लील बातें करी थी अपेरेंटली, मैंने नहीं देखा, तो मैं भी जाके कर सकता हूँ, क्योंकि टीवी पर्सनालिटीज़ को अगर कुछ हेट नहीं मिल रहा, वो भी ऐसी बातें कर सकते हैं, तो मैं भी जाकर कर सकता हूँ. आई थिंक ही मस्ट हैव थॉट समथिंग लाइक दैट कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सारी ऐसी बातें करें, इट्स ऑल फाइन, एंड एनीवन वुड डू द सेम. दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द शो. जब तुम उस शो में जा रहे हो एंड यू पार्टिसिपेटिंग इन दैट शो, अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू फॉलो द रूल्स ऑफ द शो, यू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. You can pick the game, but you cannot change the rules, right? But now, no matter what he does, no matter where he does, he has to stick to the persona that he has created for people online. Because people are fucking too dumb to understand that these things they're watching are personas and not real people. And now he's going to be a persona for the longest time. But it might be fine. It might be absolutely fine because he has been a persona for a very long time anyways. इनफैक्ट जब वो तन्मय भट्ट वाली वीडियो भी आई थी ना भाई, जब तन्मय भट्ट गोज ऑन टेलिंग रणवीर के, अरे भाई तू इतना स्पिरिचुअलिटी का ड्रामा वगैरह मत करा कर, ये मत करा कर, वो मत करा कर, लाइक दैट वाज फनी टू मी, बट अपेरेंटली इट वाज एन एक्सपोजे फॉर पीपल. सो आई डोंट फकिंग गेट इट. लाइक डू वी स्टिल नॉट अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन वर्ल्ड इज नॉट रियल वर्ल्ड? न्यूज़ फ्लैश, इट्स नॉट, जस्ट सो यू नो. 2 बन जाएंगे, नहीं एक ही बनाऊंगा. मेरा टेक्स्ट पढ़िएगा, यही पढ़ूंगा सबके. तुमको क्या लग रहा है मैं जब बोल रहा होता हूँ, होल्ड ऑन यू फकिंग रिटार्ड्स, होल्ड ऑन यू फकिंग रिटार्ड्स, होल्ड ऑन, व्हेन यू फकिंग dickheads, व्हेन आई एम स्पीकिंग, जब मैं रील का कंटेंट दे रहा हूँ, तुमको क्या लग रहा है मैं तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ रहा साथ में? तुमको क्या लग रहा है आई कैन नॉट स्पीक एंड रीड एट द सेम टाइम? डू यू रियली थिंक, डू यू थिंक आई डोंट नो कि हाई एंड ड्राई ऑलरेडी बोल चुका है? मोर रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये है कि सूडो साइंस वगैरह सपोर्ट नहीं करूँगा, राइट? और उसके बाद ऑलरेडी मुझे बता चुका है कि मेरा ऊपर वाला पढ़ियो. लाइक व्हाट डू यू थिंक, एज आई एम स्पीकिंग, एज आई एम वॉचिंग, एज आई एम थिंकिंग ऑफ द रील और द कंटेंट, डू यू थिंक आई कैन नॉट रीड योर चैट एट द सेम टाइम? व्हाट डू यू थिंक? हु डू यू थिंक यू फकिंग विद हियर? हु डू यू थिंक यू फकिंग विद? कम ऑन गाइस, come on guys, who is this?
Who the fuck you talking to? Fucking retards, dude. Fucking retards, no. Bro thinks he has aura. No, I have a lot. Bro thinks he has wit. Alright, and now let's actually read what the fuck you guys were saying. True. मेरे एक दोस्त के पापा की कोई वीडियो वायरल हुई थी. आई सपोर्टेड हिम पर्सनली एज वेल एज सभी को लिंक देकर बोला इट्स आई नो आई रिमेंबर दैट स्टोरी इवन though it was real. Okay, responsibility के साथ मतलब no more sort of science promoting guest. Yep. And I will tell the identity of him that he was okay, you know that as well. मेरा लास्ट पढ़ो. Got that. दो बन जाएंगी. Got that. बस कट गई रील. Got that already. Oh my god, like I just fucking read everything that was worth reading. Some RWE retards, that means right wing retards, I'm imagining, has been hitting on BJ Party. What? For a year since content creator thing. क्या लिखा भाई? हाँ समझा नहीं मैं. He just got caught in the middle. Wait, what? Hold on, I did not understand it at all. New objective, distract Nilesh when he's yapping for real. Come on, guys. I know you feel stupid. It's fine. I still love you guys. ब्लोजॉब पार्टी हो रही है. हाँ समझा नहीं भाई मैं. थोड़ा सा नॉर्मल इंसानों की तरह लिख देना भाई यार. तू मतलब शब्द कंबाइन कर रहा है यार. मैं रिव्यू कंटेंट काटने की कोशिश कर रहा हूँ. We're not done with this, by the way. पूरी टीम ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया. टीम में से एक भी इंसान ने रिजाइन नहीं किया इस पूरे फेज़ के थ्रू. हमारे जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएट्स, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उन सारों ने सपोर्ट किया. फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा. एंड आई होप कि आने वाले 10, 20, 30 सालों में हम एक्चुअली देश को हमारे कंटेंट के थ्रू और हमारे काम के थ्रू बदलें. पॉडकास्ट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी और हर हफ्ते पहले जैसे ही 4 एपिसोड रिलीज़ होंगे. मुझे कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा प्यार है, देश के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है, और इन दोनों वजहों से इस फुल स्टॉप के बाद मैं एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. आई होप कि आप हम सारों को, मेरी पूरी टीम को, मुझे इस नए फेज़ में सपोर्ट करें. बस ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू एंड लव यू ऑल. अब से आपको एक नया रणवीर दिखेगा द रणवीर शो पर. द पॉडकास्ट विल रिटर्न वेरी सून. नमस्ते, लॉट्स ऑफ लव. All right. I don't know. There you go. High and dry and mighty. मेरा मतदान इस बार since he was awarded those content creator awards, ultra right wing, which right wing calls trads, trads, I don't know, traditionals, have been hitting on BJP. He just fumbled. Oh, okay, maybe. All right. Oh, okay. And then you wonder why people are calling Joffrey. My guess was right. Yes, I think all of our guesses were right. ये एपिसोड वैसे बहुत बकचोद है, अनटोल्ड रामायण वाला. आई थिंक वी हैव सीन दिस गाय. आई डोंट नो इफ यू गाइस, मतलब मोस्ट ऑफ यू प्रोबब्ली डू. यू रिमेंबर अमन, राइट? तो अमन ने सजेस्ट करा था टू वॉच दिस गाय. इट वाज लाइक ऑलराइट, गुड टू सी दैट. Hypocrite. Have you seen Sanctor's content? Sanctor कौन है भाई? नहीं, देख लेता हूँ. मेरी मम्मी इसकी वीडियोस मुझे भेजती. I know. Yeah, you told us. Sanctor Singh, you mean? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा कभी. बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड, दैट सीम्स इंटरेस्टिंग. बट ये 9 मिनट की वीडियो क्यों यार? 5 मिनट की बनाया था भाई. अरे वो यशु वाला जेल चला गया. सही है भाई. क्यों? अब क्यों? कितने आदमी थे सर? कल ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਲੱਬ ਚ ਗਏ ਸੀ 10 ਆਦਮੀ थे. गंदे स्ट्रिप क्लब की गल नहीं कर रहे हैं, शॉप की गल कर रहे हैं.
a second. जेल नहीं गया, वो कल पता चलेगा, अभी कन्विक्ट हुआ है रेप केस में. ओ माय गॉड, व्हाई एवरीवन, ऑल ऑफ दीज पीपल. I've already said this once or twice before on the stream. I feel like that's a prerequisite to becoming. ये पटाखे क्यों फूट रहे हैं? हम पटाखे फूट रहे हैं? हमारे यहाँ तो किसी की चाइल्ड मैरिज भी नहीं हुई. Do they know I'm streaming? DC fast, all right. Another one. Another one. Another one. Another one. No, लड़की भगा लाया. Oh, no, did none of you guys catch the joke? Are you fucking kidding me? Wow, dude. Another one. And another one. Gabbar Singh, Dawn, Thanos, Black Panther. Parmesh? Parmesh Verma? Oh nahi hoye. Varish Parma. What? DSP, SSP, PSP, RES. The thing is, ये भाई old school YouTube content है. ये legit ओल्ड स्कूल गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल वाला है ना. अब वो क्या है गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल? बाय द वे, दिस इज ओल्ड स्कूल यूट्यूब शिट. दिस इज लेजिट ओल्ड स्कूल यूट्यूब शिट. I used to be a fan of the shit like fucking decades ago. A decade and a half ago, actually. What's up, DP? KFC, Senior Officer, Lovely Singh Bajirao Malhotra. Paran nahi, tayar haan? Tell your friend. Chop. Okay, yeah, it's not working for me now. 2016 वाला जब मेरा दोस्त मुझ पे अपनी लोकल लिंगो में जोक मार के हंसते थे. Why the fuck? Who the fuck? What is wrong with you people? Anywho, actually, you want me to see this? Every Punjabi singer these days. But this is legit old school YouTube shit. Or the guy looks like Kataria यहाँ पर. He looks like Kataria. एक ओल्ड स्कूल वाइट शीट तो 9 साल पहले थी जिसमें गैंग गैंग बैंग बैंग इकट्ठे होके मुंडे कर दिया गैंग बैंग गैंग बैंग गैंग बैंग मान गया उस्ताद साडे गाने दे 50 Hello Vivek, thanks for joining the stream. How are you, buddy? billion thousand views हो गए bro. Number 1 in Malaysia, Kazakhstan, Uganda, Africa, Cyprus, Armenia, Afghanistan, Salman Khan, Somalia, Atlantic Ocean, Pacific Ocean, ਪੰਜ ਦਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ocean. Why is he coming all over their faces? Mars, Jupiter, everywhere. Number 1 ਆ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ. Stop. ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ If you're gonna show me that he's spitting on their faces, let some of it out when you're speaking in your own shot as well. I'm sorry, why am I doing that? They're supposed to be a no-brainer comedy. मज़े में होता तो यहाँ थोड़ी आता. True, fucking true. I just wanted to ask how bad you are so I can feel good about myself, dude. What the fuck are you talking about? ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸੀ ਜੱਟ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ठीक है ब्रो. ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਮਝ ਗਿਆ? What? ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਲੀਕ. ਚੱਲ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ Hello Paul, how are you? Thanks for joining the stream, dude. ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ यार मैंने रील कंटेंट तो दे दिया साला, मैंने रिकॉर्ड तो करा नहीं वो.
जो अलग से ओके लेट मी एक्सप्लेन यू डोंट गेट इट लेट मी एक्सप्लेन तो बेसिकली क्या करता हूँ मैं दिस हाउ आई एम वर्किंग विद द रील्स सो यू कैन सी दिस नाउ माई OBS कैन यू कैन राइट तो दिस इज माई OBS right, this is how I see the chat sheet, right, and here you can see this is a vertical setup ready. So here I just need to press this button and it records the last 3 minutes of whatever happened. So I didn't record it. I'm recording the whole thing, so I can cut it out from that. I mean, give it to the editor. Eid Mubarak. Chat को shit बोल रहा है वो तो कल है ना पॉल ईद कल है अरे आज से नवरात्र शुरू हो गए ना क्या ही हूँ आपका एडिटर है आई जस्ट फाउंड वन डूड आई जस्ट फाउंड वन जो इनफैक्ट जो मैंने आज रील डाली है वो तो मैंने खुद ही एडिट करी है सैड रील और शॉर्ट व्हाट द फक एक्चुअली ये मैंने जल्दी में करी है सो यू नो लाइक दिस इज द वन एडिटर डिड फॉर मी this I just did quickly today because I mean come on we just talked about it yesterday and it's still kind of good. Allahu Akbar. Child labor? Yep, absolutely. What else? But it's fine because it's a Ugandan child, so you know, and that works. Discord. Oh yes. सही है तुम यार याद दिलाते रहा करो पार्थ ने कुछ भेजा यार तुम्हारे ना DMs तो मैं अलग करके देखूंगा मैं नहीं देख सकता सामने अचानक से मुझे नहीं पता लोड ही हो रहा है इसका DM अभी तक ऐसा कैसा DM भेज दिया यो यू dickhead oh you dickhead oh my god you dickhead oh Parth you dickhead what a piece of shit you are dude why what you sent this oh my god इसने आज तक 2 DM मेरे भेजे एक ये ऑडियो है apparently which is not an audio और एक इसने मुझे भी ये भेजा है Oh, you fucking dickhead, you piece of shit. Why? Why? You idiot. Alright. Fair enough. आकाश चोपड़ा प्लीज हेजिटेट फाइनली एक छक्का भी आया है बहुत देर के बाद आया है और शायद उतना दुरुस्त भी नहीं है क्योंकि अब तो दिल्ली बहुत दूर है पांच शर्मा जी करेंगे नॉइस तारारारा Yes, the motherfucker, take a double G, Snoop Dogg. What is this? 2 a.m. in 2 major cities of India. This seems interesting. Fairly new YouTuber. एक गाली वाला सॉन्ग भेजूँ जज मत करना भेज ह्यूज सॉफ्ट लाइट वाली लगाना ह्यूज सॉफ्ट लाइट कहाँ दिख रही है वांटिंग टीपी की है क्या वांटिंग टीपी नहीं दिख रहा मेरे को तो Where is the huge soft light? Oh, this is Marcus Specs. Oh, you fucking dick. Take it. It's his wife. This is one of the best fucking YouTube guys out there, alright? Matlab YouTube camera guys out there, Marcus Specs. Because this guy focuses on taking photos. जो भी तुम्हारे पास कैमरा फुद्दू कैमरा पैसे कैसा कैमरा बढ़िया फोटो लेके दिखाओ दैट्स व्हाट दिस गाय फोकसेस ऑन यू डोंट नीड टू बाय द न्यू शिट यू डोंट नीड टू डू द शिट एंड दैट शिट सो वन ऑफ द बेस्ट गाइज ऑन यूट्यूब फॉर कैमरा एंड स्टफ लाइक दैट and that's why he doesn't get a lot of views, you know. He doesn't make videos about the latest and greatest camera gear. He doesn't. He can afford them all apparently because he is very rich. I don't know how. But yeah, real cool guy. I agree. अरे रेसलमेनिया हो गई क्या? Are you fucking kidding me? Wait, hold on. Today's Sunday. No, it's 19th April. Yeah, wait. Okay. Bhejna.
what is this? ये क्या है? चलो देखना शुरू करता हूँ. People आज मेरे पास की नहीं है, sorry. But I will come back to this. Okay. इस पे सबका क्या रिएक्शन है? क्या है ये? The fuck. My respect for this guy. ও বাবা মারছে কেন মারছো তোমার বাবা তোমাকে জানো না দেখি তো তোমার নাম কি নিহা দেখি তো এটা বাবা মারছে না বাবা মারছে কেন মারছো তোমার বাবা তোমাকে Is it real? That's my opinion on this, first of all. नीले रेड टाइप कंटेंट कैसा लगता है? रेड टाइप कंटेंट भाई मैं समझा नहीं. रेड टाइप कंटेंट मतलब डीएम में भेजा. ओके देखता हूँ. इसकी एक वीडियो थी, उसमें इसने एक कैन में होल करके उसके अंदर नेगेटिव पेपर डाला था एंड सील्ड इट फ्रॉम बोथ एंड्स एंड वो पिक्चर का प्रिंट आ गया था. क्या? ह्यूज सॉफ्ट लाइट वाली लगाना है. स्मोक नहीं किया ना आज. भाई क्या हो गया भाई, मैं नींद में हो गया इतना. ये फिर देख. I need to know why you need to know. High and dry and mighty, because to be fair, that's kind of a stupid question. Reason being, पहले तो मैं लाई लूँ ज़रा जोर से. That's kind of a stupid question. Reason being, जितनी भी तुमने कंट्रोवर्सीज देखी हैं रिगार्डिंग रजत दलाल, जितने भी तुमने कलेज देखे हैं, फाइट देखे हैं, लफड़ा देखे हैं, मोस्ट ऑफ दोस पीपल हु एंड अप फकिंग विद द गाय end up scared of the guy, not because they are afraid of fighting him, because they are afraid of all the people who will come after them if they end up fighting him. That's the idea. He's not a fighter, he's a weightlifter. So yeah, that's why I'm saying it's a stupid question. अरे तो जो पहले कैमरा गाय दिखा रहा था उसकी बात कर रहा हूँ. अच्छा, स्मोक नहीं किया ना आज, क्या बात है. इसकी एक वीडियो थी, उसमें इसने एक कैन में अच्छा ओके मैंने नहीं देखा. Alright. Well, I hope he took the guy to the cops. He deserved more than this. Still, I mean, I get it. It's hard to disagree with what the guy did, but just take them to the cops. ये लिपस्टिक नहीं लग रही. I don't know. I don't want to be that cynical. DHH leftist politics क्या? Send interesting stuff so you can reach level 10. Nilesh will pay you 50 रुपए. कौन फैला रहा है ये? Interesting जैसे कि DHH leftist politics, tragic Reddit posts. True. DHH is my first love, dude. AFSPA, I don't know what that is. Extended in whole of Manipur, except jurisdiction of 13 police stations in valley districts for another 6 months. AFSPA, is it the Ratkirani? What the fuck? Hold on. We have a bone to pick with you, Ratkirani. We have a bone to pick with you. Just so you know. Hello, Malik. Don't fuck off, Shubdeep. Don't fucking do that now. We hate her. Kailash Sharma. Huh, exactly. Fuck off, Shubdeep, dude. Fuck off. What a simp. Damn. Bhai sahab. Simpla.
मैं सो गई थी भाई। हाँ हाँ, एक सेकेंड, होल्ड ऑन, व्हाट डू यू मीन मैं सो गई थी? व्हाट आर यू इम्प्लाइंग? क्या हम लोगों को नहीं आ रही थी श्याम शर्मा को देख के? वी वर आल्सो स्टेइंग अप, राइट? व्हाट इज दिस? wish you Eid Mubarak, we wish you Eid Mubarak, we wish you Eid Mubarak and a happy Ramadan. May Allah accept your fast and your deeds. भाई मतलब we take songs and make them into these things, but we also apparently take these things now. और फक वो बड़े की वीडियो देखी, इसके चक्कर में फक क्यों नहीं? लड़की से ऐसे चूतिया काट के, लड़की ऐसे ही चूतिया काट के चली जाती है। एग्जैक्टली, सॉरी, आई डोंट नो if I can forgive you. No, रात की रानी, I'm sorry. I'm not sure. I'm just not sure. That's one step too far, you know. Da-da-da-da. New viewers in chat. Oh my god, what the fuck? Why do that? Why do this shit? Come on. Alright. Fuck. Why? Just... What is this? ये देख लिया क्या? DM. देख रहा हूँ. Fogooj... Fuck who was Shivdeep. You got a bone to pick with Shivdeep now. ये देख लिया, सब कुछ देख लिया भाई, सब कुछ देख लिया, खत्म हो गया. I didn't miss anything now, did I? Nope. I also got the fucking real content, so I'm done for today's stream, guys. Fuck you to whoever sent that video. But यार ready हो जाओ. चलो थोड़ी देर चल मारते हैं, फिर चलते हैं. Fucking hell. Today Deepak was supposed to join. I don't know where the fuck did he go? What happened? सो गया हो गया सारा. अच्छा, oh, I missed the song. Yep. चलते हैं ना, थोड़ी देर बैठूंगा, मतलब up to you if you wanna. Okay, yes. Now I feel weird. I don't want to play this. तुमने मांगा इट्स ऑन यू. Chat will decide. I don't know. I don't know if I can play this shit. I'm not judging you, dude. That's fine. We've all seen and watched, intentionally seen and watched horrible shit. No judgment. चलो bye and good night. See you on another stream. मेरे को सुसु आया है. I stream daily at 11 sharp. DC. Alright. I don't know, guys. You tell me. Do I play this or what? Watch before ending the stream. Oh, it's the secret war game. Is the same one? Yep. Okay, let's see it today. Welcome to another. We will then use it to arrive at certain conclusions. And for those who may not know, this has real world impact. Absolutely. So sovereign rating, if India's sovereign Please rating don't. Okay, not playing it. All right. then another country, cost of money for us, foreign money, becomes more expensive. Absolutely. So now let me come to the issue of rankings and indices. This has been going on for quite some time, so it's not completely new. But you may have noticed that in recent years, there's been this rankings and indices game is a subset of the wider problem. Basically, what happens here is that we human beings basically process data. We look for objective ways of trying to judge something. Okay? I think it's better if if they're setting it up. So what is being done is
to first of all take control of information. In some cases, objective information. I'll talk about that later, particularly on medical data. But even on things that are subjective, human beings love rankings and indices and so on. And of course, it makes it very easy to then transfer that into real world things. Like it could be in sovereign ratings, it could be in academia. हाँ राती रानी तेरी वजह से शर्म नहीं आती. कान प्ले कर ले, कुल्लम कुल्ला ज्ञान फीलता हुआ अंकल नहीं. मेरी वजह से क्या होता है बदल भाई, हम लोगों का तो भाई वो है ना भाई, आई एम फकिंग स्ट्रीमिंग हियर, यू गाइस आर द व्यूअर्स, सो यू गाइस गेट टू डिसाइड हाउ एंड वेयर वी टेक द शो. I'm sorry, I'm responsible with this shit. I'm sorry, I'm serious about this shit. I'm sorry, I'm taking it seriously. I'm sorry, I'm the only one mature enough here to understand the responsibility of the show. The show must go on. That's the idea. How do you not know that? और बाकी व्यूअर से पूछना है अब. It could be for investment and so on. So if there is something that is a properly legitimized, sanctified index of some sort, we will then use it to arrive at certain conclusions. And for those who may not know, this has real world impact. Absolutely. So sovereign rating, if India's sovereign rating is unfairly shown lower, then another. अच्छा ये मुझे एक वैसे hold on. I'm sorry. It's completely unrelated. चैटी मेरा सवाल है तुमसे, क्योंकि I just had this, I don't know why. All of a sudden I had this thought. Clem hasn't been joining stream for I don't know how many days or weeks, right? She joins when things are not good. She doesn't join when things are good. So, if she joins randomly, आज कल परसों अगले हफ्ते अगले महीने 10 साल बाद, right? And she ends up telling us that she's back together with the guy. How do you guys feel about it? I'm saying that and I feel so weird because we don't know anything, first of all. We kind of do a little bit from one side of the story, but I don't like that. I already have an opinion, even though I don't know shit about with the same guy. Yeah, I don't know shit about the fucking. I know the age gap. इसके पापा क्या वो भी गई. True. With the same guy, yeah. Fucking hell, dude, it's so fucking weird. Country, cost of money for us, foreign money, I like Joffrey too. becomes more expensive. Absolutely. So now let me come to the issue of rankings. And फिर वो यूट्यूबर पकड़ ले जॉफरी को, this guy. This has been going on for quite some time, so it's not completely new. But you may have noticed that in recent years there's been this explosion of global rankings of various kinds. Happiness index, this index, that index. But there are certain rankings that have been going on for a while, like democracy index, media freedom index, and so on. Now, what basically is going on here is that a very More chill na. Nice, Ratkrani, up top. small number of Western think tanks. Because someone who has such bad decision-making skills should not be the mod. And they're all in the North Atlantic, backed in every single case almost by the same 5-6 sources of money. So there'll be USAID, Soros' Open Society, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, and the European Union, and one or two others. But basically, this very small cabal then funds a somewhat bigger group of think tanks, and then these think tanks then create all these indices. And what they then do is they rank the world, countries or societies, on whatever they have decided is the best. So it could be a democracy index, it could be a freedom of media freedom index, it could be happiness index, it could be anything, any subjective thing on earth. Now, as I said, that this may initially seem like, okay, I mean, these are somebody's opinion. Why do we care about it? We care about it because these are things that... Yeah, I care about this section, actually. That's why I played it from here. Spin wheel करो, mod बनाओ, तुम्हारे mod नहीं आते. True. Most of you guys who are here are, I trust most of you guys as mods as well, to be honest. So yeah, that's the idea of the spin wheel. I'm sorry. I'm a retard. By the way, this guy's son is an MMA fighter. You watch MMA? Nah, I don't know. I think it's a stupid fucking sport, dude. Fucking people kicking and punching each other, dude. Like, that's not a real sport. Like, like cricket is a sport. You just fucking... What the fuck is that? Just pointed out that enter into real world outcomes. Sovereign ratings is one, but let's... Most इसलिए बोला क्योंकि मैं हूँ वरना all of you बोलता. Absolutely. नहीं, but I prefer to have a girl as a mod. That's why Clem... Wait, hold on. Did I just out myself as a fucking DEI hire? No, I did not. And you didn't hear it. Clem was the mod because she absolutely deserved to be the mod because she was so competent,
so determined in her decision making, so quick with the bans. She was hired as the mod, hired being used lightly, loosely. She became the mod because she was the most skillful person to be the mod. It had nothing to do with her perceived gender, because you do need to remember, none of you dickheads I know, all of you could be anyone. Like, I know Bindra, I know Shubdeep somewhat. Shubdeep is a dickhead. Like, पता नहीं शुभदीप में वो हरामी जो पना है ना, तो शुभदीप हैज़ टू बी अ फकिंग यू नो चाइल्ड. आई रियलाइज के मैं जितनी हरामी चीज़ बोलूँगा ना इसके बाद उसको शुभदीप विल लाइक इट. या अ चाइल्ड dickhead. That's how we fucking do it, bitch. That's how we fucking do it. I know you're gonna like the horrible thing, so I call you a fucking child, you imbecile. I don't even know what that word means. If it means something horrible, yes, you still are that. mod बनने के लिए you be ऐसे लिखना पड़ेगा. Yes. शिवदीप अगर mod बन गया बहुत बुरा है, इसलिए तो spin the wheel नहीं हो रहा भाई. हाँ, well, you know, yes, I prefer to have one girl and one guy as the mod. What's wrong with that? By the way, Joffrey अभी भी Discord को mod है. क्या इतना बुरा? बच्ची देखी नहीं, पिघल गया. Fuck you, dude. Fuck you, dude. Fuck you. How about that? Fuck you. I don't know any topic. No, he left the stream for good. Radhirani. Why not me, Niles? Head boy, head girl, choose कर रहा. Yup, exactly. भगा दिया बेचारे को. You guys are fucking retard, alright? Let's say there's a large fund like JP Morgan or whatever. They actually use these indices in their investment decisions. Similarly, various kinds of risk analysis around the world uses these kinds of indices. It then feeds into academia. And so what happens, a certain kind of narrative gets set in the world about a certain subject. Now a further thing is happening. You see, now this is getting fed into artificial intelligence as well. So now what happens when you have artificial intelligence, if you type in XYZ, are you a democracy? Say, your kids or mine could Google, is India a democracy? Now how does the artificial intelligence, whichever system it is, whichever large language system it is, how do they decide that? They have been trained on certain kinds of data. So they are all basically the same ecosystem of information is then used by them to come to certain conclusions, because eventually the algorithm doesn't know what is or it is not democracy. All that is happening is certain kinds of things have been told that these are legitimate sources of information, and then it does that. Now what will happen as a result is your kids will then grow up, because most kids are not going to go into the Haha is now feeling the chest dose वाली. अरे वो कौन था भाई जो आया था? ये हाई एंड ड्राई कुछ भी नाम रख लें इनको तो कुछ. अरे रात यार तेरे से प्यार इतना पागल. इन आई डोंट गिव अ फक अबाउट दीज डिकहेड्स. एक लड़की है स्ट्रीम में. ऑलराइट. the depth of it. They'll just see certain, is media free in India? The system will go in, search for a bunch of these legitimate, supposedly legitimate indices, rankings, etc., and come to a certain conclusion, and it will tell you this. So this is how essentially narrative wars are fought. Now let me show you how this game is played. So basically, the small number of ideologically driven guys will. One second, hold on. I'm sorry, I got involved in that. What he was saying, whatever that guy was saying. I got involved in whatever the fuck this guy was saying. Who are you? Satisfy you? I will not satisfy you. How dare you say that to me? It's not like you changed your name. Your name is Raat Kirani. Alright? कौन सी मैम थी? Fund this bunch of think tanks. Then they will create a bunch of indices. Now, people may think, these are famous institutions, varieties of Democracy Index in Stockholm, or Freedom House in Washington, whatever it is. And you think that, they must have done some great research, etc. The reality is that most of this is based on the opinions of a small group of people they have supposedly surveyed. They don't tell you who these people are. And very often they're just 5-6 people per country, perhaps. Just somebody, and maybe they're not even 5-6 countries, you don't even know, they don't tell you. Maybe they're 20, but it doesn't matter. I mean, would you even do a college election ranking or survey based on, doing some 20 people or something? They're ranking the whole world based on these. But VDEM, which makes this European organization, which makes this democracy index, and which doesn't think very highly of India, they claim that they do high maths and supercomputers. Absolutely. Why do you need high maths to survey 20 people? Exactly my point. Okay. So what is going on here is... Okay, if they do not tell how many people they survey, how is he saying they are surveying like 20 people? Do they not tell, or do they not do the survey with enough people? What's the idea here? अगर वो नहीं बता रहे तो there's no reason for you to assume कि हाँ it's just 20 people. You can assume n number of people. So that sounds weird.
Hold on, is there some information on this? How many people are surveyed? How do you spell surveyed? I don't even fucking know. It doesn't matter. It will correct it. For democracy index. Yep. Survived? इतना बुरा लिख दिया क्या? Fuck me. Come on, dude. SURVEYED. ये क्या लिख दिया मैंने? Wait, what the fuck is happening to me? How many people are? SURVEYED. YD. I don't fucking know. I don't care. ये रे पार्थ क्या हो गया भाई? ये क्या बातें हो रही हैं? He's undermining legitimacy. So why give them a free point? अच्छा उससे पहले तुमने पूछ लिया. He's also assuming that it might be. Okay. All right. गाली क्यों सेंसर हो जाती है? नहीं मिलेगा. Trust me, he is not चूतिया. No, I'm not calling him a chutiya. But there must be something, right? By the way, if there is nothing about it online या फिर कहीं पर भी, then that is kind of a chutiya move to say 20 people. Maybe it's an effective strategy to strawman the argument, but yeah. Is this a Wikipedia article? The global state of democracy methodology. They have given the methodology, right? Is this not it? Conceptualization measurement framework. Okay, I'm not gonna read all of this shit. Fuck off. Abstract में क्या है? About this document. Okay, there's no abstract or something like that. I mean, there's some information about this. The objective of international ideas in global state of democracy indices. I don't know what this is. The global state of democracy conceptual framework measuring the global state of democracy. The global state of democracy indices is in the I don't know. In comparison with extent measures, cautionary notes, references. Alright, it's something else. Let me Google Slytherin. And try and mighty 100 points to Slytherin. Watch the video, you'll get juicy stuff. Trust me, it'll be anyway word jargon. Don't waste time on this. All right. So you hold on. You don't want me to take the video seriously, but you still want me to watch this. Why? Okay, chat. How many of you want to watch this? I mean, democracy, right? I am such a jovial guy. If you know, you know. So yeah, it's a democracy. No. Not the document, seriously. Nahi dekhna. I don't. Hata BC isko. Alright, okay. No need for language here. Alright. Hata or else I'll break YouTube server, not your YouTube. Alright, calm down. वीडियो नहीं मिलेगा, देख ले भाई. वीडियो में मिलेगा. वीडियो में क्या मिलेगा भाई? Sorry, वीडियो में क्या मिलेगा? I've seen this guy on Instagram. He also makes YouTube videos. I am very much disappointed in महाराष्ट्र के लोगों पे भाई. ये उम्मीद नहीं थी भाई. तुम तो बहुत स्वीट बनते हो यार. ये क्या करते भाई? मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है तुम्हारे जैसे लोग कर सकते हैं. ये सही नहीं है. This is not right. कुणाल कामरा ने जो भी बोला तुम्हें पसंद नहीं आया. ये हरकतें नहीं है. You should point this out. वो बात अलग है कि कुणाल कामरा खुद ऐसी चीजों को सपोर्ट कर रहा था कुछ सालों पहले जब यही सेम चीज कंगना रनौत के साथ हो रही थी. क्या उसका नाम? कंगना एक्ट्रेस है ना? हाँ, वो एक्ट्रेस है. आपको क्यों हो रहा है? नहीं मुझे तो दुख नहीं हो रहा है. मैं फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा. ठीक है, चलो दुख नहीं हुआ मेरे को तो. और देखो मेरे को ना समझ नहीं आता कि पॉलिटिशियंस का आज के टाइम पे कॉमेडियंस के पीछे जाने का राज क्या है. रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? जैसे इंडिया में सारा क्राइम खत्म हो गया. औरतें बाहर निकल के आराम से घूम रही है. बच्चे सारे सेफ हैं. सिर्फ एक साथ सब कुछ सॉर्टेड है भाई इंडिया में. हमें किस चीज पे फोकस करना है? हमें फोकस करना है कुणाल कामरा ने क्या बोला. देखो जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन जोक्स मारते हैं वल्गर जोक्स इनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि मॉरली करेक्ट है या नहीं है. Okay. Oh my God. I don't know how to take this. Because this on the surface,
on the surface this sounds like, yes, of course, obviously this guy is absolutely right, but at the same time, not really, because listen इंडिया में हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है कुणाल भाई यस बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब बात आती है, चाहे वो कोई कॉमेडियन कर रहा है, चाहे वो कोई और कर रहा है, दैट इज़ सच अ फाउंडेशनल थिंग व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेटिक आइडियल्स, सो इट इज़ नॉट अ लिटिल थिंग। एंड यस, तुम ये कह सकते हो कुणाल कामरा ने क्या बोला उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी लड़के के साथ कोई क्राइम हो, किसी भी लड़के के साथ कोई क्राइम हो, और किसी भी जगह पे, यस दैट इज़ मच मोर important in the if you look at it from the perspective of the lives of the people, the lives of the individuals, right? But if you look at it in the grand scale of things, it's actually a little different. Reel cut rahi hai, nahi cut rahi, dickhead. I'm not. Why do you think I would be doing that right now? You know what? The next time you think I'm doing a reel segment, ठीक है? The next time you think I'm doing a short segment, go on, go fucking crazy in the chat, and I'll tell the editor, or if I'm editing myself, I'll put something from the chat, something. You gotta add something funny, something interesting, something weird, fucking do some shit like that, okay? I don't know. If you want to make it a game, make it a game. Get good at it. He tells about COVID policy and vaccine. Gender ratios grew up, and they are not conspiracies. Watch it. That guy again. Why? Calm down. We'll watch. I stream live every day. We have a lot of time. I mean, as long as you decide to join. कामरा ने क्या बोला, देखो जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन जोक्स मारते हैं, वल्गर जोक्स, इनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि मॉरली करेक्ट है या नहीं है। इन इंडिया देयर आर मेनी मोर केसेस। ये जापान नहीं है। जापान में पुलिस क्या कहती है कि अगर आपकी एक 2 रुपए की चीज भी खो जाए ना, तो आपकी रिपोर्ट लगाओ, उनके पास इतना फ्रीडम है। इंडिया में नहीं है भाई, इंडिया में बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं। सबे रहना, हर्ष गुजराल, ये सब करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम इसके ऊपर टिप नहीं दे सकते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। कुणाल कामरा, नो कॉन्सेंट एंडेड। अच्छा बेटा कुणाल, जब सेम चीज कंगना रनौत के साथ हो रही थी, तब Hold on. Now, okay, now I really gotta hear this guy. Hold on, please. हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है कुणाल कामरा ने क्या बोला, देखो जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन जोक्स मारते हैं, वल्गर जोक्स, इनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि मॉरली करेक्ट है या नहीं है। इन इंडिया देयर आर मेनी You are also making a video about it, right? मोर केसेस। ये जापान नहीं है। मतलब यू कैन नॉट जस्ट क्लेम कि भाई देखो कितना स्टूपिड है, हम इतने सारी चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, while I'm making a video about this particular thing. I'm sure this guy probably makes a lot of videos about other things as well, लेकिन you're still focusing on this thing right now in this video. ये सेम ही तो कंटेंट है, राइट विंग लेफ्ट विंग सब सेम ही बोल हैं, सेम आर्ग्यूमेंट, सेम हिपोक्रेसी, वाई वेस्ट टाइम ऑन द सेम स्टाफ। विवेक है क्या चैट में? आई एम नॉट श्योर। You didn't ask me, you just asked him if he was here. So see, I'm just being so nice that I responded to you even though you didn't ask me. I'm not sure, haha, क्योंकि no, I'm not sure if it's all the same stuff, but yes, that is true. I don't think any side fundamentally supports freedom of speech or ideas like these, but those are the ideas worth going after. जापान में पुलिस क्या कहती है कि अगर आपकी एक 2 रुपए की चीज भी खो जाए ना, तो आपकी रिपोर्ट लगाओ, उनके पास इतना फ्रीडम है। इंडिया में नहीं है भाई, इंडिया में बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं। सबे रहना, हर्ष गुजराल, ये सब करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम इसके ऊपर टिप नहीं दे सकते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। कुणाल कामरा, नो कॉन्सेंट एंडेड। अच्छा बेटा कुणाल, जब सेम चीज कंगना रनौत के साथ हो रही थी, तब तुम एंजॉय कर रहे थे, रिपीट पे देख रहे थे। अब सेम चीज तुम्हारे साथ हो रही है। आई मीन इसमें तुम्हारा तो कोई घाटा हुआ नहीं ना कि वो करने पड़ा, पर तुम उसके लिए सिंपैथी जता रहे हो करने के लिए। तो तुम ऐसी चीजें सपोर्ट क्यों कर रहे थे? तुम सपोर्ट कर रहे थे वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ हो रहा है वो गलत है। देखो कुणाल कामरा के बारे में हम बात करें ना, डू आई लाइक हिज कॉमेडी? ना भाई, लेट मी बी क्लियर अबाउट वन थिंग कि कुणाल कामरा एक प्रोफेशनल हेटर है ऑफ बीजेपी। वी ऑल नो दैट, बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। अब इतना समझो, देयर इज अ बिग पार्ट ऑफ ऑडियंस जो बीजेपी को लाइक नहीं करते। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे, तो इसी चीज का फायदा उठा के हमारे कुणाल कामरा इनके ऊपर मजाक बनाते हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत बड़ा पोर्शन है जो बीजेपी को लाइक नहीं करेगा, वो फंसेगा। तो मैं कह रहा हूं, अगर ये एक साइड को लेके उनके ऊपर जो बना रहा है, तो दूसरी साइड को लाइक करेगी। एंड बाय द वे, आई आल्सो डोंट लाइक बीजेपी, सो मेरे को प्लीज बीजेपी से एसोसिएट मत करना। एक चीज ना मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो कुणाल कामरा, समय रहना, हर्ष गुजराल, एक्स वाई कॉमेडियन जो भी वो बोलते हैं वहां पर, वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच रहता है। कभी कभार वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सोशली एक्सेप्ट। बस 2 का ही आर्ग्यूमेंट सही था, उस गंजे होमो का और कैनेडियन का, बाकी हिपोक्रेट ही है। कौन किसकी बात कर गया भाई? हैं? नहीं है, हम उस चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द फ्रीडम ऑफ राइट। वो कुछ भी बोले, हम उनके ऊपर केस कर सकते हैं लीगली अगर ऐसा कुछ बोलते हैं। ऑब्ससीन चीजें। कुणाल कामरा ने जो जोक मारा था एक नाथ शिंदे जी पर, वो कई लोगों को ऑफेंड कर गया। एंड उनके पार्टी वर्कर्स आके वेन्यू पर धमकी देने लगे, फोन स्विच ऑफ है। तुम लोगों ने वो वाली रिकॉर्डिंग सुनी होगी जो तमिलनाडु में बैठा हुआ था कुणाल कामरा। क्या बोले तूने सबके बारे में? वीडियो डाला है, देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख रहे हम लोग क्या हाल किया, अभी कुछ सीधा मिलेगा ना, वो याद होगा। इधर है तू शर्मा में जो दोनों आते हैं। अच्छा, तमिलनाडु तेरी
तमिलनाडु में आके मारेगा देखो तमिलनाडु आ जाओ तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई देखो इसी चीज की वजह से लोग ना ज्यादातर गुस्सा है आज के टाइम पे कि पॉलिटिशियंस के पास ये सोशल वर्कर्स के पास पार्टी वर्कर्स के पास इतना काम नहीं है क्या कितने सारे क्राइम है बाहर चल रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट बच्चों के अगेंस्ट एनिमल्स के अगेंस्ट इवन लड़कों के अगेंस्ट भी चल रहे हैं इन सारी चीजों को ये नजरअंदाज करके ये बस अपना कुल्लू सीधा करने के लिए बैठे हुए हैं बताओ यार इतने लड़कों के अगेंस्ट क्राइम्स. I was getting bored with this video. What the fuck is people doing today? Nothing? Are you kidding me? YouTube is dead. There's no point of being on this website anymore. करते कर्नाटक के बीड़ी गांव में क्यों? क्योंकि दोनों ने 50 लाख रुपए गवा दिए साइबर. Wait, what? Deleted? So hey guys, नहीं मेरे ख्याल से उसने डाली ही नहीं कोई वीडियो आज. फिलहाल बात करते हैं बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज ऑफ कपल के बारे में. ये न्यूज बता दूं कर्नाटक से, ठीक है. 82 ईयर के बुजुर्ग आदमी और उनकी 79 ईयर की वाइफ दोनों ही करते हैं कर्नाटक के बीड़ी गांव में क्यों? क्योंकि दोनों ने 50 लाख रुपए गवा दिए साइबर फ्रॉड में. जो 82 ईयर के बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने इसके बारे में नोट में लिखा ना, वो दो बंदों को उनके जिम्मेदार बताए, सुमित बिरला और अनिल यादव. नोट में लिखते हैं कि उनको कॉल आता है सुमित बिरला की तरफ से जो कहते हैं कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली. Yeah, that is actually very sad. Oh my god. उनको बताते हैं ना कि आपका जो Old folks dying. में वो फ्रॉडुलेंटली परचेज किया गया फॉर इलीगल एक्टिविटीज. इसके बाद सुमित बिरला वो कॉल ट्रांसफर कर देते हैं अनिल यादव को, जो कि अपने आप को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताते हैं. इसके बाद अनिल यादव उनको डराने लग जाते हैं कि तुम अरेस्ट हो गए, ये वो अरेस्ट नहीं होना चाहते तो हमें पैसे देने पड़ेंगे. इस चक्कर में जो 82 साल के बुजुर्ग आदमी थे वो उनको अच्छा लाइव स्ट्रीम करने से पहले देख लेना वो वीडियो. ठीक है यार भाई चल मैं देखता हूँ. Let's see. He stabs himself, you know. I don't know. Who? This person? You mean? जिसकी बात करें न्यूज़ बॉय. 50 लाख रुपए टोटल ट्रांसफर कर देते हैं. इसके बाद भी वो नहीं मानते और पैसे मांगने लग जाते हैं. तो इसी वजह से दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं. जो 82 साल के बुजुर्ग आदमी है वो चाकू से अपने ही गले में करते हैं और उनके रिस्ट में भी इंजरीज पाई गई है. जो वाइफ है वो पॉइजन खा करती है. देश में साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपको पता होगा. पता नहीं पुलिस क्या कर रही है. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें. निशु तिवारी के बारे में. निशु तिवारी उनके फ्रेंड को एक्ट किया गया और उनका जो कार है उसको भी तोड़ दिए कुछ लोग. 10-12 लोग जो उनको बेवजह पीछा कर रहे थे. उनका गाड़ी का क्या हालत हो रखा है आप देख सकते हो. उनका दोस्त का हालत आप देख सकते हो. जिसने गाड़ी तोड़ा उसका चेहरा भी आप देख सकते हो. एक्जेक्टली क्या हुआ था, किस लिए किया गया था, इसके बारे में निशु तिवारी बताइए. और दिल्ली पुलिस को भी रिक्वेस्ट की वो क्या कही आप देखिए. वो सीसीटीवी कैमरे से निकाल नंबर आ गया. मैंने जो लड़के की बात करती हूँ वो भी दोबारा आए थे, ठीक है. उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी, अपनी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी. मैंने उनको कुछ नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है. वो सुबह से मुझे ट्रैक कर रहे थे, सुबह से और मेरे फ्रेंड को भी बहुत मारा. मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में राजधानी में दिन दहाड़े हुआ है. मैं आज वीडियो शूट करी थी और उसके बाद मैं चाय की टपरी पे रुकती हूँ चाय पीने के लिए. तभी वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ आती है, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो और भी 2-4 जिन पे काले शीशे थे और वो बदतमीजी करते हैं दिन दहाड़े, ठीक है. मुझे हरास करते हैं, मेरे ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं. इसके बाद मैं बहुत ज्यादा घबरा गई तो मैं वहाँ से चली गई और मेरा दोस्त अभी वहाँ पर गाड़ी मोड़ रहा था. वो बंदा जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो वहाँ पर आता है, मेरे दोस्त को मारता है, मेरी गाड़ी तोड़ता है, उस पर हमला करता है. ये गाड़ियाँ मुझे सुबह से ट्रैक करी थी मेरे पीछे, फिर भी मैंने इग्नोर की और वो मेरे पे हमला करने आए थे. मेरी पूरी गाड़ी तोड़ी है. अगर मुझे या मेरे Who is she? मतलब क्यों अटैक कर रहे हैं? Does anyone know her? What, like, is it the type of content she does? टीममेट में से किसी को कुछ भी होता है तो यही लड़के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जो अटैक कर सकते हैं भाई क्या भरोसा करो क्या करेंगे. अगर मैं उनको रोड पर अकेली दिखूं, ये लोग तो अपने नंबर प्लेट हटा देते हैं, गाड़ियों के शीशे निकाल लेते हैं, मुझे गाड़ी में भर ले, मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो कौन होगा इसका जिम्मेदार. मुझे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस पर भरोसा है कि मैं इतनी पावरफुल फैमिली से नहीं आती कि मेरे घर में सब ये करते हो, गुंडागर्दी करते हो या मेरे घर में बहुत पैसा हो जो मैं इन सब में पकड़ना पड़ूं. मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा है भाई. टैग करो दिल्ली पुलिस को, उन तक के पहुंचे और कुछ हो भाई. ये जो गाड़ियों के शीशे काले करा के घूमते गुंडागर्दी करते नंबर प्लेट हटाते हैं, अगर आज मुझे उड़ा देते या मेरे साथ कुछ हो जाता तो भाई कौन जिम्मेदार होता है. इसके बाद निशु तिवारी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करती है. दिस कंट्री नो लॉन्गर फील्स लाइक अ सेफ प्लेस फॉर दोज़ हू सिंपली वांट टू लिव पीसफुली, पे देयर टैक्सेस ऑनेस्टली एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस ग्रोथ. आज मैं रियलाइज हुआ कि हम उस पाथ से बहुत दूर है. देयर सीम्स टू बी नो सिस्टम इन प्लेस टू प्रोटेक्ट ऑर्डिनरी सिटीजंस, ओनली फियर और द हार्ट ब्रेकिंग चॉइस टू लीव द कंट्री बिहाइंड. और जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया जाता है बताइए कि इंडिया में एक वुमेन होना बहुत टफ है. एक फेमस वुमेन या फिर कंटेंट क्रिएटर होना तो वो और भी टफ है. एट टाइम्स इट फील्स लाइक अ कर्स. और जो बताते हैं कि रास्ते में कैसे लोग घूरते हैं, सीटी मारते हैं, क्यों? ताकि हम कुछ रिएक्ट करें. और जो बताते हैं कि जो कानून है, जो पुलिस है, अथॉरिटीज है, जिन्हें हम ट्रस्ट करते हैं वो जरूरत के टाइम पर नहीं होते हैं. वो बताते हैं कि जब आप ट्रबल में होते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आप You just said I trust the Delhi police. Don't. This is probably not the time to criticize the police right now if that's your only way out. ये बोल रही थी रजत दलाल को बिल देखिए अकेले. You ticket. अकेले हो. अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस क्रूएल रियलिटी. और भी कुछ लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज करके भी रीड कर सकते हो. लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो. चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें. बियर बाइसेप्स के बारे में. तो बियर बाइसेप्स फाइनली इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बाद एक पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पर. बोले कि हीलिंग बिकॉज़ ऑफ यू ऑल, बी विद अस टुमारो. एक तरफ बियर बाइसेप्स हील कर रहे हैं, राज समान क्रेजी हो रखा है. उनका बहुत ज्यादा एमएस धोनी के साथ एक पॉडकास्ट आ रहा है, आपको बताओ इसका ट्रेलर लीक Hi Nagraj, क्या हाल है? Thanks for joining the stream. हुआ है. वो You are high and dry and mighty, aren't you? पॉडकास्ट कब आउट होगा तो पता नहीं, लेकिन कल वो एक पॉडकास्ट अपलोड किया बिलियनियर बिल गेट्स के साथ. अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो. और क्या बियर बाइसेप्स ने उनके पॉडकास्ट को एक्सपोज कर दिया गया है. एक यूट्यूबर ऑफिशियल पिंग ह्यूमन वो एक यूट्यूबर अर्पित एक्सप्लेन्स के साथ एक वीडियो पोस्ट किया अपने चैनल पर बाय द टाइटल इंडिया स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट इज बैक. Okay, no, you're not. लिखा हुआ है किंग ऑफ ब्रॉडकास्ट. इस वीडियो में रणवीर अल्हाबादिया का जो मोस्ट व्यूड वीडियो है रामायण के रहस्य जो पॉडकास्ट किया था अक्षय गुप्ता के साथ, उस पॉडकास्ट में Why would you think that? Because you were talking about Slytherin. It was you and Parth Sharma, so I just took a shot in the dark. Why not? किया बातों को डिबंक करते हैं. साइंटिफिकली वो प्रूव करते हैं कि इस पॉडकास्ट I think Parth ने ऊपर चैट पे बोला था ना 100 points to Slytherin, 1000 whatever. में जो बात किया गया वो फेक है. इतना ही इस वीडियो Pretty good reason for a shot in the dark, no? तो बताते हैं कि रणवीर अल्हाबादिया के पॉडकास्ट में जाकर जो गेस्ट आते हैं वो कुछ भी बोलते हैं. By the way, Nagraj, are you new here? Slytherin Nagraj से कैसे रिलेटेड है भाई? तूने हिंदी वाली हैरी पॉटर नहीं देखी क्या?
उनके बातों में लॉजिक होता नहीं है। मैं दिखा देता हूं ऑफिशियल पिंग में छोटा सा वीडियो, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में रणवीर बाइसेप्स को फिर से अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट करने की परमिशन दी। वेट ये क्या हो गया? क्या वो फेक है? इतना ही इस वीडियो में बताते हैं कि रणवीर अलाहाबादी के पॉडकास्ट में जाकर जो गेस्ट आते हैं वो कुछ भी बोलते हैं इलॉजिकल, उनके बातों में लॉजिक होता नहीं है। मैं दिखा देता हूं ऑफिशियल पिंग में छोटा सा वीडियो, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में रणवीर बाइसेप्स को फिर से अपने नहीं, नो आइडिया अबाउट हैरी पॉटर। ऑलराइट, देयर यू गो. Slytherin is like, I don't remember Harry Potter very well. Slytherin was basically for the evil people, all right, but also for the strong ones. And is it not related to serpents? I think Hindi mein to, wait, let me see. Slytherin in Hindi is, abe yaar, अरे यार. Okay, he's Parth. He is? Shit. हिंदी में लिखा हैरी पोटर स्लीथरिन. Harry Potter Slytherin. Just fucking ruined it. Nagesh Nag Shakti. And he's Nagraj. Is it Parth? I almost said Parth. नहीं जानना. Fuck it. Being Human की वीडियो देखनी मुझे. It is you, Parth, isn't it? It is. By the way, this is another shot in the dark because Parth usually ऐसे हा लिख देता है. So guys, come on. Deduction. बिंद्रा क्यों बोला? Hold on. बिंद्रा ने बाद में बोला after I told him my two options, and based on your ha, I could tell it's you. I gave the reason before your chat came in. Alright, fuck you. क्या देख रहा था मैं? Being Human. Let's see. I think one of the most mind-shattering things I've read in my life is the chapter that Yuval Noah Harari wrote about religion, where he said that every single religion in the world is I should have included me in your prank. built based on stories. What prank? But the issue is that every single religious person believes that only their stories are Whoa. true and all the other ones are false. And religion always is a technique used by powerful people. Wait. I think one of the most mind-shattering things I've read in my life is the chapter that Yuval Noah No, this is interesting. I don't even know what this is. Harari wrote about religion, where he said that every single religion in the world is built based on stories. But the issue is that every single religious person believes that only their stories are true and all the other ones are false. And religion always is a technique used by powerful people to control mobs. हेलो मित्रों, 4 महीने के लंबे हेल्थ ब्रेक के बाद I like the editing. I do. I like the editing. मैं YouTube पर वापस आ गया हूँ. बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम. आज हम मजे करेंगे. और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं, बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है ऑन इंडियाज बिगेस्ट पॉडकास्टर. फ्रॉडकास्टर. ये शख्स जिसका नाम अलाबादिया. तेरा नाम अलाबादिया नाम है, पता नहीं क्या नाम. रणवीर अलाबादिया. ही इज बेटर नोन बाय द पॉलिटिकल हिंदुत्व ब्रिगेड एज रणवीर प्रयागराजिया. बट मैं इस प्राणी को रणवीर बाइसेप्स बुलाना पसंद करता हूँ बिकॉज़ इट्स इनोवेटिव, इट्स न्यू. और रणवीर बाइसेप्स भाई के पॉडकास्ट देख के लोगों के दो ही रिएक्शंस होते हैं. या तो वो कहते हैं तेरे प्रश्न अच्छे हैं, वेरी डिफरेंट. और दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये पॉडकास्ट देख के उल्टी आती है. Goodbye, Shivdeep. Thanks for joining the stream. पीछे से आगे से. जेन्युइन सवाल है. और फिर अगर रणवीर बाइसेप्स डार्क जोक मारने की कोशिश करे तो लोग पागल होकर कहने लगते हैं कि इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे. और ये वीडियो उस फालतू जोक वाली फुली मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी पे नहीं है, बल्कि ये वीडियो रणवीर बाइसेप्स भाई के YouTube करियर पर आज तक की सबसे डिटेल्ड और डीप डाइव एनालिसिस प्रेजेंट करेगी, जिसके लिए मैंने हायर किए थे 10 PhD लेवल रिसर्चर्स जिन्होंने 1 महीने तक नॉन स्टॉप रणवीर बाइसेप्स की हर वीडियो Okay, hold on. Is he going to talk about grifting? How Ranveer just changed his personality entirely? His online personality? Is he going to talk about grifting? Let's see. That's my guess right now. को हर एंगल से स्टडी किया है और इस डीप सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन से जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आए हैं वो 100% आपके दिमाग में चीर फाड़ बता देंगे. अपने रिसर्च में आपको सबसे डरावनी चीज क्या लगी? हॉरर पॉडकास्ट करने के बाद ना मैं पार्टी में By the way, grifting say, I mean how he changed his personality entirely for the, profits. Also, he might not, probably doesn't truly believe in the shit he says. But the thing is, he's never really put out an opinion. नमक और पानी मिक्स करके उसमें नहाता हूं. बात कर रहे हो सच्ची? हाँ सच्ची. और इसके साथ ही हमें ये भी पता चला कि असम के चीफ मिनिस्टर की FIR के बाद गुवाहाटी पुलिस स्टेशन ट्रैवल करने से पहले रणवीर बाइसेप्स एस्ट्रल ट्रैवल कर चुके हैं. I do get an astral experience. I can see my body from like a bird's eye view. और पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में बैठने से पहले उसका भूत प्रेतों के साथ उठना बैठना लगा रहता था. बट हमेशा लगता है कि जब वो बात कर रहे हैं उनके साथ रूम में और कोई नहीं है. और डार्क कॉमेडी के चक्कर में फंसने से पहले वो कई बार काले जादू के चक्कर में फंस चुका है. पहले आप पर काला जादू करना था उन्हें. और ऐसी अनसाइंटिफिक मनगढ़ंत बकवास बेचने के लिए वो 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है. पहले तो फालतू के सनसनीखेज टॉपिक्स उठाता है. अभी सर एक तीखा सवाल पूछूंगा. क्या देव What? No way. एलियन थे और उनके साथ साथ असुर भी एलियन थे? तो भगवान ऊपर से आए थे. और फिर ऐसे गेस्ट को बुलाता है जो फैक्चुअल ट्रूथ को पीछे हटाकर सेंसेशनल स्टोरी टेलिंग को सबसे आगे रखना पसंद करते हैं. देव दानव के बीच के युद्ध एक्चुअली कुछ एलियन रेस के वर्ल्ड वॉर्स थे. इंटरगैलेक्टिक वॉर होता तो Astral travel. Logan Paul का भी सेम ही था after suicide forest incident. Yep. होगा और मुझे तो लगता है अभी भी हो रहा है. आपको शर्म फील होती है ये सब करके? इसलिए
See, that's what I like about this guy, they're editing. It was an open letter to Ranveer Allahbadia requesting him कि भाई थोड़ा तो सुधर जाओ because कॉमन गोल है कि इंडिया को चेंज करना है। और देश को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने के लिए ही हमारे फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया था कि देश में साइंटिफिक टेम्पर को एनकरेज करना सबकी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना ये मेरा इरादा नहीं है। फरवरी 2025 में इंडिया गॉट लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट ने रणवीर बाइसेप्स को कोई भी नया कंटेंट पोस्ट करने से टेम्परेरी बैन कर दिया था। Round of applause for the Supreme Court of India in this case. Absolutely brilliant. All these guys are going to go out of business right now. और अर्नब के हेटफुल सपनों पर पानी फिर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में रणवीर बाइसेप्स को फिर से अपने चैनल पे वीडियोस पोस्ट करने की परमिशन दे दी, पर एक कंडीशन के साथ, दैट द कंटेंट हैज टू मेंटेन डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो ये न्यूज़ सुन के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि रणवीर बाइसेप्स ने जो इंडिया गॉट लेटेंट पे कूल दिखने के लिए महाफेल जोक अटेम्प्ट किया था उसे तो पूरी इंडियन सोसाइटी ने कलेक्टिवली ऑब्सीन मान लिया। और जो वो अपने चैनल पे पॉडकास्ट के थ्रू सालों से सक्सेसफुली कर रहा है उसको अगर लॉजिक, रीजन और साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारा कंटेंट हद से ज्यादा ऑब्सीन, इनडिसेंट और इमोरल नजर आता है। So the alien, yeti, booth, everything, I know it works and I will keep doing it. Nothing that comes out of my mouth is not for views or subscribers and I'll do anything to do. और मैंने भी इस वीडियो के स्टार्टिंग में रणवीर बाइसेप्स से इंस्पायर होकर उसी के स्टाइल में बिल्कुल सेंसेशनल और उससे भी कतई फॉल्स क्लेम्स किए थे कि मैंने उसके चैनल की हर वीडियो का हर मिनट देख के एनालाइज करने के लिए 10 To be honest, I don't love Ranveer Allahbadia's face. I don't mean his looks. I don't mean, I'm not saying I don't find him hot. Of course I do. I mean, have you seen that guy? But no, he just seems very cunning. When he's talking about this shit, when he's really talking about this shit, like he was just saying, I do everything for you. He's like, yes, I know. But he seems very cunning when he says that, when he says what he's really doing. So yeah. Not a face I trust. PhD level researchers hired. Yes. Yeah, Geoffrey, thanks for that. What? Why do we respect constitution makers? Weren't they just humans? Wait, do we not respect humans? What? किए थे जबकि सच ये What? रणवीर बाइसेप्स के पॉडकास्ट को डिबंक किया एक्सपोज करने के लिए ना तो किसी हाईली एजुकेटेड डीप डाइव की जरूरत है। और Plus, hold on. Also, Ranveer, oh my god, am I body shaming the guy now? I'm not, right? क्योंकि मैंने बोला he's super hot. So. 10 PhD level And researchers हायर किए थे जबकि सच ये I said cunning, not ugly or anything like that. But his ear is a little weird, right? मतलब मुझे लगता है सबके कान थोड़े से इस टाइप के होते हैं. I don't know what can you see. Obviously तो अपने आप को देख के you make an image of the world, but like that's a very flattened out ear. Like did he break it or something? ये हाँ जॉफरी जैसी बातें करता है, कंटेंट भी वैसे ही भेजता है. गलत वर्ड में भी पुट देम ऑन अ पेडेस्टल से रिप्लेस कर लो. कौन से वर्ड को? कॉमेंस निकल आया तो सोने पे सुहागा. ये है रणवीर बाइसेप्स के पॉडकास्ट को डिबंक किया. Respect. Okay. Why do we put constitution makers on a pedestal? Weren't they just humans? Well, we are the beneficiary of that constitution, aren't we? एक्सपोज करने के लिए ना तो किसी हाईली एजुकेटेड डीप डाइव की जरूरत है और ना ही एक दो पॉडकास्ट से ज्यादा देखने की जरूरत है. और इसीलिए इस वीडियो में मैंने 10 PhD रिसर्चर्स नहीं बल्कि सिर्फ एक रैशनल यूट्यूबर अर्पित एक्सप्लेन्स के साथ कोलैबोरेट किया है. This guy, he's actually going to destroy you. और अर्पित भाई ने मेरी मदद की द रणवीर शो के हाईएस्ट व्यूज वाले पॉडकास्ट के रैंडम अनसाइंटिफिक क्लेम्स को साइंटिफिकली डिबंक करने में. Let's science the shit out of it. द रणवीर शो के हाईएस्ट व्यूड पॉडकास्ट पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ व्यूज हैं और इस एपिसोड का टाइटल है रामायण के रहस्य. हिंदू ऑथर अक्षत गुप्ता ऑन एंशिएंट सीक्रेट्स, वेपन्स एंड मिस्ट्रीज. अक्षत गुप्ता सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हम. तो इसी बात पे शुरू करते हैं. Also, I need to say this thing क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है, बहुत अजीब चीज़ बोल रहा हूँ मैं क्योंकि most people don't think about these things. जिस तरीके से like this guy official being human is doing a collaboration with another guy who is an expert in his field, I really like that because otherwise most of the content creators will do कि अच्छा देख लेंगे उसके ऊपर थोड़ी सी research कर लेंगे and they'll just provide the facts. But it's always better in my opinion because when I'm watching the content it's always better to see collaborations like these जिसमें दोनों लोग अपनी field के बारे में बात कर रहे हैं ढंग से. Oh, yeah, this is the same video I was talking about. Oh, yes. Yeah, religion of retards. Actually, communism. All right. पॉडकास्ट के फर्स्ट टोटली अनसाइंटिफिक क्लेम्स है दैट आवर माइथोलॉजी इज एक्चुअली आवर हिस्ट्री. Oh my god, yes. I don't understand why people keep saying that. I'm not cutting a reel. Fuck you guys. I don't understand why people keep saying that. I really don't. और भाई ये जो हिस्ट्री वाली बात हो गई ना, इसको मिथ मत बोलो, हिस्ट्री बोलो. चलो ये हमारे पास इतने एविडेंस नहीं हैं टू पुट ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन हिस्ट्री. दैट्स फाइन. ऑनेस्टली आई डोंट केयर अबाउट इट एज मच. Saying that makes the term myth seem so minuscule. What does it do to the term myth? How you do shot? No, fuck off. I'm not doing the shot. I told you, did I? But what the fuck is the word? It undermines the value of myths.
दैट इज़ माई बिगेस्ट इशू विद इट कि ये इसको मिथ मत बोलो, इसको मिथोलॉजी मत बोलो, ये हमारी हिस्ट्री है. भाई साहब, you are undermining the term myth so much. You don't even know what the fuck it means, you fucking dipshits. So yeah, that fucking annoys me. And that annoys me because, well, I am from a filmmaking background. Probably that's why it annoys me. Minuscule, है ना? ट्राई करो, होगा. अच्छा, हो गया? रील कंटेंट हो गया? नहीं यार, ये डालने लायक नहीं थी. बताओ, अगर है तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा. बैक ट्रैक कर लूँगा 3 मिनट पीछे के, हो जाएगी डिट. Guys, fucking hard, dude. Fucking help me out, bitches. माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करना कम पसंद करता हूँ. सेम मेरा मानना ये है कि अगर आप मिथ्या मानते हैं इन सब बातों को तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्य मानते हैं तो सत्यालॉजी रहेगा. हिस्ट्री माइथोलॉजी को हम इसी बात पे शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट के फर्स्ट टोटली अनसाइंटिफिक क्लेम से, दैट आवर माइथोलॉजी इज एक्चुअली आवर हिस्ट्री. रिटेक भी कर सकते हो. I can do. तो मैं अगर बेशर्मी पे उतर आया ना, मैं स्ट्रीम का लास्ट घंटा एक रील एडिट करने में निकालूंगा. उसके बाद तुम लोग चले जाओगे, वो बात अलग है, बट आई विल बी लाइक, आई एम स्ट्रीमिंग आल्सो, आई एम एडिटिंग. व्हाई द फक नॉट. माइथोलॉजी शब्द का उपयोग करना कम पसंद करता हूँ. सेम मेरा मानना ये है कि अगर आप मिथ्या मानते हैं इन सब बातों को तो माइथोलॉजी, अगर आप सत्य मानते हैं तो सत्यालॉजी रहेगा. हिस्ट्री Scene. Fucking, I hate it. Oh my god, I hate it so much. I'm not, I really do. Fuck it. I'm not gonna get into myths right now. I cannot. I'm not capable. मीम रिव्यू भी कर सकता है यार. मीम भेजता कौन है मीम? बात तो है ना. और मुझे ढूंढने आते नहीं. माइथोलॉजी का जो डिफरेंस है वो किसी के मानने या ना मानने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एविडेंस पर डिपेंड करता है. जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं उसके हमें एविडेंस मिलते हैं, जो कि हो सकते हैं पुराने डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, आई विटनेसेस का रिकॉर्ड वगैरह. और इन सब रिकॉर्ड्स को जब हम मैच करते हैं तो ये सब बड़े अच्छे से मैच होता है. जबकि माइथोलॉजी का ना तो कोई एविडेंस. वाह, my favorite YouTuber Ranveer is back. Nice. Getting goosebumps. मिलता है और ना ही कोई क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड. यही वजह है जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं उनकी टाइमलाइन को लेकर सभी की अपनी हपली और अपना राज होता है. फॉर एग्जांपल, भगवान राम को इंसान प्रूफ करने के चक्कर में एक बीजेपी नेता आके उनकी उम्र कुछ 9000 साल बता देता है. तो 7140 समथिंग बीसी की डेट निकल आई. वहीं एक भड़काऊ बाबा भगवान राम की इंसानी उम्र कुछ और बता देता है. 8,70,000 वर्ष. अब जैसे रामायण की टाइमलाइन को त्रेता युग का बताया जाता है, यानी आज से लगभग 17 लाख साल पहले. साइंस के हिसाब से ह्यूमन एवोल्यूशन की टाइमलाइन को अगर देखें तो हमें पता चलता है कि मॉडर्न ह्यूमन, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो आज से लगभग 3 लाख साल पहले इवॉल्व हुआ. यानी आज से 3 लाख साल पहले इस धरती पर हमारे जैसे ह्यूमन. No, I was under the impression डेढ़ से 2 लाख. See, that's why you need experts in their fields. I mean, I don't know if Arpit is an expert in this, but that's his niche at least. Oh, तन्मय भट्ट सेम मीमर्स जो मैं भेज रहा हूँ उन पे वीडियो बना रहा है. सच्ची भेज भाई साहब. ऐसे कैसे बल्कि कुछ और चीज थी जो कि न केवल दिखने में हमसे काफी अलग थी, बल्कि उनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी हमसे कम. तो ऐसे में एक सोफिस्टिकेटेड कल्चर जैसा कि हमें माइथोलॉजी में देखने को मिलता है, वो उस टाइम पर होना पॉसिबल ही नहीं. आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? Arpit is expert rationalist. कल से शुरू. ठीक. It is 100% real. महाभारत और रामायण दोनों 100% real है. अब ये कोई सरप्राइज नहीं. 100% real. That's such a retarded statement to make. It is 100% real. What the fuck do you even mean? 100% real. Like, do you want me to take you seriously? If I'm gonna take you seriously, I'm gonna take each and every word that you speak seriously. When you say 100% real, what do you mean? Because 100%, is that an exact historical record that we are reading or that we are seeing? Is it interpreted differently? And if it is, then किसकी interpretation कितनी सही है? So what do you mean 100% real? You mean the book that we have, is that what, historical records? रियल है मेरे शहर में हुई, मेरे बेड़े में रथ पार हुए थे. ऐश्वर पार्थ, अगर तू तन्मय भट्ट की वीडियो से मीम चोरी करके लाया ना तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी. भाई तुम लोगों को तो इतनी नफरत है ना, मैं गलती से भी अगर कोई एक ऐसी चीज़ देख लूँ जिसको चलने के चांस हो हैं. भाई सर, भाई के फेवरेट पॉडकास्ट हमेशा वही रहते हैं जो हिंदू माइथोलॉजी को इंडियन हिस्ट्री प्रूफ करके बीजेपी और आरएसएस के इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले एजेंडा को आगे धकेलते हैं. कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के डेथ के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी, और ये भी कहा जाता है कि महाभारत वाज रफली 3000 BC. I'll simply say, जो मैं मिथ वाली बात कर रहा था ना, तो I wouldn't want to get into it. As I said, I am not capable. But in simpler terms, I'll quote Aristotle. He said something like, art is more important than history. I think he was talking about art. He didn't say that verbatim. But that was kind of a rebuttal apparently. Vendra तेरे को ज़्यादा पता होगा शायद. To what Plato said, like in the Republic, right? He said art is more important than history. That was the idea. That's definitely true for myths. Absolutely true, in my opinion. In my humble opinion, I agree with Aristotle.
जब लेटेंट चल रहा था सब मिल करते करते थे उसको, तुमने एक लाइव रिएक्शन नहीं दिया। हाँ यार, हग दिया मैंने। बट कम ऑन, यू लिव टू हग अनदर डे एंड माई डी भाई। पर लेकिन सच में यार लेटेंट पे मैंने लोगों का इतना देखा है ना, मैंने लाइक इट्स नॉट दैट आई वाज़न्ट अवेयर, आई वाज एब्सोल्युटली अवेयर। मैंने इतना मुझे सच बताऊँ जो दिक्कत थी ना लेटेंट पे रिएक्ट करने में, आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि अगर मैं लेटेंट पे रिएक्ट करूँगा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि मैंने देखा भाई 50 सब्सक्राइबर, लाइव स्ट्रीम चल रही है, 300 लोग देख रहे हैं। फक राइट। द रियल इशू आई हैड विद रिएक्टिंग टू लेटेंट इज यार, पहली बात तो लाइव चल रहा है, मतलब एटलीस्ट आई डोंट नो लाइव चलता प्रीमियर चलता था क्या था, आई डोंट रियली नो, इट वॉजंट लाइव, आई थिंक इट वॉज रिकॉर्डेड कॉन्टेंट, तो प्रीमियर चलता था लेकिन उसका। द अदर थिंग इज लाइक देर ऑल जस्ट देर मेकिंग जोक्स, सो what is my reaction to it? I see a lot of people, they're just laughing like retards and they're overreacting on jokes. ये बात कैसे बोल दी, और कोई अगर डाक हो रहा है तो ये बात कैसे बोल दी, and it's like too performative for me. So I was never sure how or what kind of a reaction can I give to someone performing, मतलब some people performing and someone judging. तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था कि I wasn't sure कि मैं कैसे क्या करूँगा। तोतलू बुलाते थे हम उसे, वो तो अब हाइप बन गई उसकी, बड़ा आदमी बन गया, लोग एरिस्टोटल बोल रहे हैं, हमारे तो आज भी तोतलू बोलते हैं। बीसी के आसपास क्या आप ये मानते हो 3000 बीसी तक, यानी कि कुछ 5000 साल पहले जादुई अस्त्र इंसान यूज करते थे? ऑफ कोर्स यहाँ पर रणवीर बाइसेप्स का जीनियस गेस कहता है कि 5000 साल पहले जादुई वेपन्स होते थे और फिर टाइम के साथ-साथ ये जादुई शक्तियां गायब होने लग गईं क्योंकि इंसान मैच्योर इनफ नहीं रहा। वी आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल सच थिंग्स। जबकि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और हिस्टोरिकल एविडेंस हमें बताता है 5000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जो इंडियन रीजन की सबसे पुरानी नोन सिविलाइजेशन है, जहां वेल प्लान्ड सिटीज थी, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था और इंटरनेशनल ट्रेड भी एग्जिस्ट करता था। और हमें पता है क्योंकि इन सब चीजों के सबूत मिलते हैं, पर आज तक ना तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में आज के किसी धर्म और ना ही किसी लार्ज स्केल धर्म युद्ध का कोई सबूत मिलता है। और ये बात रणवीर बाइसेप्स के लिए समझना नामुमकिन है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे भारतीय ज्योतिष को we also don't have the translations, we don't understand their writings, do we? And you're mature enough to handle nuclear bombs. शास्त्र को इस वजह से डाउट कर रहे हैं क्योंकि इसे डाउट करना कूल बन चुका है अमेरिका में, यूरोप में, जहां हर चीज के पीछे वो प्रूफ ढूंढते हैं, वो साइंटिफिक एविडेंस ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो Okay, hold on, let me listen to this now. क्योंकि this some of it is true, but not in the way he means or his guest interprets or the way official being human is gonna say. But yes, some of it is true what he's saying. किसी लार्ज स्केल धर्म युद्ध का कोई सबूत मिलता है, और ये बात रणवीर बाइसेप्स के लिए समझना नामुमकिन है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे भारतीय ज्योतिष को राष्ट्रशास्त्र को इस वजह से डाउट कर रहे हैं क्योंकि इसे डाउट करना कूल बन चुका है अमेरिका में, यूरोप में, जहां हर चीज के पीछे वो प्रूफ ढूंढते हैं, वो साइंटिफिक एविडेंस ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो So yeah, that one statement जो बीच में होता है ना कि you can find the piece of diamond in the coal, diamond in the rough, whatever. We need to understand scientific way is only one way of looking at the world. That's not the way of looking at the world. Again, not gonna go too much into it because I don't understand it. And first of all, it's again related to myths. If you read Jung, you get that. आज के धर्म का मिल जाता है, so he is वरिंग देयर। क्या? हाँ समझा नहीं भाई मैं। सिर्फ ऐसी चीजों को मानते हैं जो साइंस से प्रूव्ड है। तो आज के जमाने में जो वेस्टर्न साइंटिस्ट प्रूव करते हैं उसमें विश्वास रखते हैं। पहली बात, ईस्टर्न साइंस वेस्टर्न साइंस जैसा कुछ भी नहीं होता। साइंस पूरी दुनिया में, चाहे फिर इंडिया में हो या फिर वेस्ट में, एक ही तरीके से की जाती है। अगर आपकी मेथोडोलॉजी साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती है तो वो साइंस है। और साइंस हमेशा अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है और मिसिंग गैप्स को भरने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए साइंटिफिक नॉलेज में लगातार एवोल्यूशन और ग्रोथ चलती रहती है। Wonderful that you said that there are many scientific theories which were proved wrong, and then a new theory came, and who knows tomorrow that theory will be proved wrong. Good, but there was a theory 1400 years old developed by an Arab, 14-year-old, a tribal. That cannot be changed. That is perfect. It doesn't make any sense. तो दुनिया में साइंस जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, वो रिलीजियस डॉगमास को चाहते ना चाहते हुए गलत प्रूफ करता चला जाता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हर रिलीजियस इंसान अपने धर्म को छोड़ The issue with that is science is also extremely ultra rationalist. के हर दूसरे रिलीजन या कल्चर के अनसाइंटिफिक होने को आसानी से मान लेता है। वेस्टर्न कंट्रीज में जिस पहले आदमी ने बोला था ना कि अर्थ इज राउंड, उसको फांसी पे टांग दी थी। ये फैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं पर मिल जाएगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में पहली बार जिसने अर्थ के स्फेरिकल And the issue with the fucking what would you call it? It feels even weird to say scientific arrogance. Like just listen to Richard Dawkins, you'll get what I'm saying. The guy was a hero at one point of time, and now I don't know. In my radar, he's fallen off. A guy claims he has a translation, and it is Vedic, old Sanskrit, and though it only happened a few days ago, so not made to news. Oh, okay. What am I saying? स्फेरिकल होने की बात की थी वो था एरिस्टोटल, जो कि 300 बीसी के आसपास था। 200 BC। Oh my God. आज के दाम, ओके ये समझ नहीं आता मुझे।
थे, ये फैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं है पर मिल जाएगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में पहली बार जिसने अर्थ के स्फेरिकल होने की बात की थी वो था एरिस्टोटल, जो कि 300 बीसी के आसपास था। 200 बीसी के आसपास एरिस्टोफनीस आता है जिसने कि बाकायदा मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि अर्थ एक स्फीयर, और इन दोनों को ही किसी ने भी फांसी वगैरह पर नहीं लटकाया, उसको फांसी पर टांग दिया था, ये फैक्ट। नो इनफैक्ट एरिस्टोटल की डेथ पेट खराब होने की वजह से हुई थी, और वहीं एरिस्टोफनीस ने खुद को भूखा रखकर अपनी जान गंवाई थी। पर रणबीर बाइसेप्स के गेस्ट वेस्ट को नीचा दिखा के हिंदू संस्कृति को ऊंचा दिखाने की कोशिश में जो गलत कहानी कॉन्फिडेंटली बता देते हैं, वो शायद गैलीलियो की बात कर रहे थे, नाम मुझे ध्यान नहीं है, जिसने कहा था कि Are you kidding me? No. No. South Park made Richard Dawkins पर कुछ episodes and they are considered very good in that regard. Oh, all right. अर्थ और बाकी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और ऐसा कहने के लिए गैलीलियो को मुजरिम मानते हुए हाउस अरेस्ट की सजा सुना दी गई थी, क्योंकि उस समय कैथोलिक चर्च का मानना था कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, और गैलीलियो का साइंटिफिक क्लेम उनके रिलीजियस बिलीफ्स को गलत प्रूव कर रहा था। और जैसा कि हम आज तक जानते हैं कि साइंटिफिक बिलीफ्स हर्ट करने में और रिलीजियस बिलीफ्स हर्ट करने में सिर्फ जेल का फर्क होता है। तो साइंटिस्ट को हर सभ्यता में परेशानी उठानी पड़ी है। हमारा सबसे बड़ा जो हीरो माना जाता है साइंटिस्ट को नहीं, किसी भी एक्सट्रीम थिंकर को, बिकॉज कोई भी अगर एक्सट्रीम थिंकर होगा बाय देयर वेरी नेचर, बाय देयर वेरी डेफिनेशन, दैट पर्सन विल बी एन एक्सट्रीम liberal. Now, I'm not talking about his or her political leanings, but their ideas will be so fucking new. If they are like that, they are going to break down all the norms. The norms relate to the conservatism. So, by their very nature, they will be extremely liberal. जितना ज़्यादा तुम उस स्पेक्ट्रम में लिबरल साइड में घुसते जाओगे एंड इफ़ यू आर इनोवेटिव इनफ, इफ़ यू आर अ जीनियस लाइक गैलीलियो, इफ़ यू आर अ जीनियस लाइक सोक्रेटिस, तो देन ऑफ कोर्स दे गोना वांट टू किल यू बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड यू, यू आर अ थ्रेट टू देम। अब समझ आया मेरे को मैं क्यों सफ़र कर रहा। ट्रू एजेस में वो आर्यभट्ट, उसकी किताब खत्म कर दी गई। हमारे पास वो किताब अरबिक मीटिंग में ट्रांसलेट हो गई, इसलिए लौट करके आई, और उसकी एक प्रति कहीं मिली केरल से बड़ी मुश्किलों के साथ। हमें अकेला बड़ा साइंटिस्ट है जिसके बारे में ये नहीं मालूम कि वो कहाँ पैदा हुआ। हमारे यहाँ हर एक की जन्मपत्री होती है, उसकी जन्मपत्री नहीं मौजूद। उसने ये कहा कि राहु केतु कुछ नहीं होते। आर्यभट्ट के ये कहने के ऊपर कि राहु केतु कुछ नहीं होते हैं, पोंगा पंडितों का सारा कारोबार इस पे चल रहा है, तो उनका अटैक करना लाजमी था जी। और जब साइंस और टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड दुनिया में रिलीजन, हैव यू रेड सावरकर? नो, आई हैव नॉट। साइन बॉर्न फ्रॉम वेद को बिजनेस बना के बेचना हो तो आजकल का फेवरेट तरीका है टू मेक वाइल्ड क्लेम्स अबाउट आवर ओन रिलीजन बीइंग द मोस्ट साइंटिफिक। आज के भाई साहब मुझे पता क्या, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लेकिन लुक एट द थंबनेल यार, लुक एट हिज फेस, लुक एट द गाइज फेस, he's spreading misinformation. Like, look at, you're proud of yourself, look at that face. Like, there's no way he thinks all of this is the real, right? He knows he's spreading misinformation. He knows he's doing it for views. He knows he's doing it for profit. But look at that face. How can you be so proud of yourself while you're doing that? I don't know, man. I don't know. Maybe, like, is there a fucking amount? Is there a number of followers that's enough? So you don't have to do that. Like, do you have any integrity? डोमिनेटेड दुनिया में रिलीजन को बिजनेस बना के बेचना हो तो आजकल का फेवरेट तरीका है टू मेक वाइल्ड क्लेम्स अबाउट आवर ओन रिलीजन। I know the video would be horrible or whatever, but the face is what's really getting to me. द मोस्ट साइंटिफिक। आज के ज़माने के साइंटिफिक पैरेलल्स क्या है हिंदू धर्म को लेकर? 1600 वाले ईयर में पहला टेलीस्कोप बना, और नासा ने बताया, वेस्टर्न कंट्रीज ने बताया हमको कि सूरज है और 9 प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं। हम पहले से जानते थे। कैसे जानते थे? इसका प्रूफ ये है कि 16वीं शताब्दी के पहले से हम 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं ना। 16th सेंचुरी में टेलीस्कोप की डिस्कवरी के बाद गैलीलियो ने साबित कर दिया कि अर्थ समेत सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। पर जहां तक प्लैनेट्स की बात, तो उनके बारे में दुनिया को बहुत पहले से पता था। अप्रॉक्स 1000 बीसी के आसपास बेबीलोनियन सिविलाइजेशन को प्लैनेट्स He should be liberals hero. Who should be? And the other thing is, कोई चीज़ बताना, कोई चीज़ मानना वर्सेस कोई चीज़ प्रूव करने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। वैसे other thing, I think that's what he's getting at. के बारे में पता था। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, इन सभी को आंखों से देखा जा सकता है। उनका पता लगाने के लिए किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं। जहां तक हिंदू धर्म में 9 ग्रहों के मेंशन होने की बात है, तो ये वो 9 ग्रह नहीं है जो कि साइंस बताता है। इन 9 ग्रहों में सन, मून, राहु और केतु शामिल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्लैनेट नहीं, और अर्थ भी इसमें शामिल नहीं। आप हमारे हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा है अर्थ और सन का, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। बहुत कई 100 कई हजार साल बाद। No, it's not. It's not. I think even that guy Science is Dope made a video about this. फिर एक दिन नासा ने बताया कि अर्थ और सन का these many light years, this is the distance। तब दुनिया को मालूम चला। हनुमान चालीसा में सन की डिस्टेंस बताने वाले क्लेम्स में कई तरह के झोल हैं। सबसे पहला झोल तो ये है कि लोगों को लगता है कि अर्थ से सन की डिस्टेंस लिखा अर्थ और सन का, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। बहुत कई 100 कई हजार साल बाद फिर एक दिन नासा ने बताया कि अर्थ और सन का these many light years, this is the distance। How many light years? These many light years? Sun is not light years away. Not even close. Am I a fucking retard? How long does sunlight? Fuck. Yes, I am a retard. Take to reach Earth. 8 minutes 20 seconds. Wow. तब दुनिया को मालूम चला। This is probably the most embarrassing thing I've seen yet on this video. हनुमान चालीसा में सन की डिस्टेंस बताने वाले क्लेम्स में कई तरह के झोल हैं। सबसे पहला झोल तो ये है कि लोगों को लगता है कि अर्थ से सन की Like you're gonna claim कि भाई हनुमान चालीसा में जो बिल्कुल सही था, उसके बाद नासा ने आगे बताया इतने लाइट ईयर्स है, and you're so off. You don't even know नासा कितना कहता है। ऐसे ही हनुमान वाला भी सही था,
What are you doing, dude? सबसे पहले नासा ने बताया, जो कि सरासर गलत। सन से अर्थ की डिस्टेंस को नापने की कोशिश 300 BC में शुरू हो गई। अरिस्टोटल वो पहला बंदा था जिसने सन की डिस्टेंस नापने की कोशिश की। Savarkar. He should be liberal zero. अच्छा, Savarkar should be. They should use Savarkar to say, become a light him to dumb Hindus. Great stuff. His books. I don't know what you're saying. You're writing weird. की थी। बाद में 17th सेंचुरी में कैसिनी ने इसे काफी हद तक एक्यूरेटली मेजर किया और फिर केवल सन की डिस्टेंस बता देने भर से बात नहीं बनती जब तक कहीं इसकी प्रॉपर मेथोडोलॉजी ना मिले। साइंस क्रोनोलॉजिकली चलता है। अगर आप कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स को फला चीज पता थी तो उसकी मेथोडोलॉजी उस टाइम के लिटरेचर में कहीं ना कहीं नजर आनी चाहिए। जैसे हमारे पास उस टाइम के कई फेमस एस्ट्रोनॉमर्स जैसे कि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, लल्लाचार्य, नीलकंठ वगैरह की बुक्स मौजूद, पर उनमें तो सन की डिस्टेंस को नापने का कोई मेथड नहीं दिया गया। कार्ल सेगन का एक बड़ा फेमस कोट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे क्लेम्स करना सिर्फ रोमांटिसिज्म ऑफ द पास्ट एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रिलीजन है और कुछ भी नहीं। इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं कि जो लोग इसको माइथोलॉजी मानते हैं उसका और साइंस का बहुत करीबी ताल्लुक। मतलब हमने विमाना पुराण लिखा है। आप सोचिए ना कि कैसे कोई विमान पुराण लिखेगा। पहली बात तो विमान पुराण नहीं बल्कि वैमानिक शास्त्र है और इसे भी बहुत पहले डिबंक किया जा चुका है। वैमानिक शास्त्र जिसे प्राचीन और ऋषि भारद्वाज रचित बताया जाता है उसे हमने 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पंडित सुब्बाराव शास्त्री ने लिखा। 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने इस पर स्टडी की थी जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसे पढ़ सकते हैं और जिसका कंक्लूजन ये था कि ये एक मनगढ़ंत किताब है और इसके ऑथर को एरोनॉटिक्स की जरा भी समझ नहीं। उस पे नासा सच में उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है जिसमें फ्यूल में मर्क्यूरी यूज होता है। बाकी जहां तक नासा के रिसर्च करने की बात है तो ये पूरी तरह से बकवास। ये सिर्फ इसलिए बोला जाता है ताकि लोग इनकी बिना सरकार की बकवास पर विश्वास करें। यूएफओ शेप I don't like this guy. Which guy? Me? विमानस भी होते हैं, विमानस भी होते हैं। और ये जो मर्क्यूरी की बात आपने जस्ट अभी करी, ये मैंने पढ़ा है कि मर्क्यूरी पावर विमानस होते थे। मर्क्यूरी का ये होता है कि जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो लाइट होता है। मर्क्यूरी गर्म करने से लाइट हो जाता है। व्हाट? तो आप किसी चीज को लाइट करेंगे, बलून कैसे होता है? हीलियम गर्म होता है तो लाइट होता है तो ऊपर चला है। देखिए हीलियम तो ऑलरेडी एक लाइट गैस है और उसे गर्म करने की भी जरूरत नहीं। रूम टेंपरेचर पर ही उसकी डेंसिटी आसपास मौजूद एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है और इसलिए हीलियम से भरा हुआ बैलून ऊपर की तरफ जाता है। किसी चीज के हल्का होने के लिए जरूरी है कि उसकी डेंसिटी का कम होना। हवा को गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और इसलिए हॉट एयर बैलून उठाता है। बट मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म है और उसकी डेंसिटी वाटर से 13.6 टाइम्स ज्यादा और गर्म करने से वो लाइट नहीं हो जाएगा। ये पॉसिबल बात। इवन इन गैसियस स्टेट मरकरी की डेंसिटी एटमॉस्फेयर से अप्रॉक्सिमेटली 7 टाइम्स ज्यादा होती है। तो इवन मरकरी वेपर के जरिए भी किसी चीज को उड़ाना पॉसिबल नहीं। तो हर चीज का ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। अच्छा, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है मेगाफोना का। मेगाफोना यानी कि बड़े-बड़े एनिमल्स। उसी पर्सपेक्टिव से वानरसेना और जटायु के बारे में पूछना चाहूंगा। क्यों इन्फॉर्मेशन हमें बताया कि किस तरह से स्पीशीज अर्थ की हिस्ट्री में इवॉल्व होते हुए यहां तक पहुंची। इस जर्नी में तमाम स्पीशीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई अलग-अलग रीजन के चलते एक्सटिंक्ट हो गई और जिनके फॉसिल्स आज हमें मिलते हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके फॉसिल्स हमें नहीं मिले होंगे और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके फॉसिल्स शायद हमें कभी मिलेंगे ही बिकॉज़ फॉसिलाइज होना एक रेयर प्रोसेस है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम माइथोलॉजिकल एनिमल्स को इस डेप्थ में फिट करते हैं और कहने लगे कि जब डायनासोर्स हो सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए ये बात एकदम सच है। ये मिथ नहीं है, ये हिस्टोरिकल साइंस है, इसके एविडेंसेस हैं। मैमथ सच में थे। तो अगर ये बोला गया कि इंद्र एक हाथी पे चलते थे जिसका नाम ऐरावत था, जिसके 3 सर थे, वो व्हाइट एलिफेंट था और बहुत पावरफुल था, तो मैमथ उसके बहुत बाद के जो हमको प्रूफ्स मिलते हैं। क्योंकि जब आप ऐरावत की बात करें तो आप मैमथ से भी पहले की बात करें। एवोल्यूशन की टाइमलाइन को अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो आपको समझ में आएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बदलाव तो होते हैं पर उनके बेसिक बॉडी प्लान में ज्यादा चेंज कभी नहीं आता। जैसे मैमल्स की अगर बात करें तो जिसमें कि हम इंसान भी आते हैं तो सभी मैमल्स में एक सर, एक धड़, 4 हाथ पांव मिलते हैं। यहां तक कि हाथ पैरों की उंगलियां भी 5 ही होती हैं। एवोल्यूशन ना जादू से कुछ भी गायब कर सकता है और ना ही जादू से कुछ भी पैदा कर सकता है। और फीचर को पैदा होने में और एक्सटिंक्ट होने में करोड़ों साल लगते हैं। उसके बाद भी उसके रेमिनेंट ढूंढे जा सकते हैं। जैसे वेल के केस में उसकी लेग बोन और हमारे केस में हमारी टेल बोन। ऐसे में 3 सर वाले हाथी का अचानक से पैदा होकर बिना कोई निशानी छोड़े गायब हो जाने का क्लेम करना विशुद्ध बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं। और आज ऐसी विशुद्ध बेवकूफी I think to be fair, Arpit made the video very boring. इतनी इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है कि मोदी गवर्नमेंट के and being human basically did a little bit of the video and he just passed it to Arpit. स्टडी मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोल सकते हैं विज्ञान तो ज्योतिष What about वो सरदार जी ब्रदर्स? कौन सरदार जी ब्रदर्स भाई? इसके सामने बौना है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 का श्रीमान। और मोदी गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर सतपाल सिंह ने एक बार फिर ये कहा कि इंसानों की विकास यात्रा बंदरों से शुरू नहीं हुई। चलो भाई मुझे आ रही है गंदी नींद. The only hate I have for these scientific guys is they read someone's article and claim it as gospel truth rather than read stuff by himself. I don't believe you, but no, they don't. So, yeah. However, for a minute, so okay. Anyways, fuck it. You said you would. Yeah, I cannot. I'm sorry, dude. I'm really sorry. Haha. DC. अरे क्या हो गया? DC पे busy. Oh, okay, this guy. What is this? भाई क्या भेजे तुमने? पागल बना रहे हो? What is this? Bollywood fashion community on Reddit. Kangana Ranaut. Winter season in Parliament. So people are rating her fashion sense? Impeccable. Oof. Her body has such grace and movement about it. Muse material. Oh my god, this... I would love for this guy to continue and be like, it is the highest compliment of which I am capable. Dude, you're commenting on Reddit. Calm down. She does the sari plus overcoat look so wonderfully well without it looking like a pile of ill-fit clothes. Just watch it on 2x. Okay, yeah, I've been watching it on 2x. Don't care, PD. Why do you have a care for that?
मुझसे याद आया डेडविल देखा है यार, नहीं मैंने देखा। भाई हाँ हाँ तूने एक चीज़ भेजी यार आज तक, अब मैं क्या बोलूँ बता। Go God go. This is All right. Dawkins. Kids, it is now my job to teach you the theory of evolution. Oh boy! Now, I for one think that evolution is a bunch of bull crap, but I've been told I have to teach it anyway. Okay, no. It was thought up by Charles Darwin, and it goes something like this. In the beginning, we were all fish, okay? Swimming around Fuck off. in the water. And then one day, a couple of fish had a retard baby. And the retard baby was different, so it got to live. So retard fish goes on to make more retard babies. And then one day, a retard baby fish crawled out of the ocean with its mutant fish hands, and it had butt sex with a squirrel or something and made this retard frog squirrel. And then that had a retard baby, which was a monkey fish frog. And then this monkey fish frog had butt sex with that monkey, and that monkey had a mutant retard baby that screwed another monkey, and that made you. So there you go. You're the retarded offspring of 5 monkeys having butt sex with a fish squirrel. Congratulations. Over billions of years, life has evolved from simple one-celled organisms into all the complex life we see around us. Whatever. It was changes in hereditary traits that allowed the first mammals to breathe in the air. मतलब मुझे एक बात बता, हाँ हाँ, is there something specific you want me to watch there? Is there something extremely specific? Because you really, really want me to watch that. Fish frogs. Ms. Garrison, I believe that's a gross oversimplification. Well, you're a faggot. Continue. You see, children, life has the amazing... He says that with his leg folded, earrings in his ears, and a hand above his knee, the other one on his crotch. You gotta watch this video. Isme Dawkins convinces this teacher to become an atheist. All right. ability to change, to adapt, like changing us to the point that we But yeah, I'm so done with Dawkins, actually. I really am. upright. So you are saying that we're all related to monkeys? I mean, Dawkins gives so much Neil deGrasse Tyson vibes to me now. And I really like to listen to क्या नाम है उसका, Brian Cox, when I'm listening to scientists at least. I really like to listen to that guy, even though I haven't listened to him nearly enough. Well, yes, basically we are. You see monkeys at the zoo? They crap in their... From 2005, all right. So there is something specific you want me to watch there. All right. Where is it? चलो फिर ख़त्म करते हैं भाई. देखो मतलब hold on, 2005 से पूरा you want me to watch the whole thing? Read them, which makes this your Not something I normally looked at. But what happened is that during COVID, as you may remember, I was part of the core team that guided the Indian economy through the COVID crisis. So at that time, I'm going back to the year 2020. Okay, so this is a legit guy. अभी भी ये चल रहा. रात की रानी. Oh my God, how dare you? How dare you? If you weren't even watching this, I just got back to it. 10 minute का. Okay. At that time, I was also co-chair of one of the most important tracks of G20 called the Framework Working Group. Okay. Now, we are in end March, early April of 2020. Remember, we are going into lockdown. One by one, the world is going to lockdown. And systems worldwide are just breaking down. Okay, the movement of people, movement of goods, finance, things are just literally breaking down. Even the European Union internal travel was breaking down. There can't be scenario planning for something like Exactly. that. No one imagined it. Yeah. So, in that situation, you need Oh, very, very, very nice input, man. I'm sorry, I'm just a dick for no reason. But it's like, yeah, the guy is speaking, let him speak. ये नागराज कौन है? ये बता दूं क्या? पहले तू जज कर रहा था क्या तुझे क्या पता तुझे सही इंसान लगे क्या पता बेकार इंसान लगे पहले तू जज कर कैसा इंसान लग रहा है. I'll just tell you it's not Shubdeep, don't worry. Some protocols to keep the world functioning, right? Now, WHO wasn't helpful, as you will remember. The UN wasn't being helpful. The only institution that sort of functioned at that time was the G20. And they decided that, look, we are the 20 most powerful and important countries in the world. It's not. See, Rati Rani, again, I read your mind, right? Like that. Simple as that.
why don't convincing everybody in the UN is going to take forever? Let G20 basically create a basic protocol of various kinds of economic, financial, and other protocols to keep the world functioning. So they gave this job to this group called the Framework Working Group. Okay? Now the Framework Working Group, of which I was the co-chair along with my colleague, my equivalent from the UK. So we were given the job, you now write down these basic protocols. So we wrote down the protocols and they was updated a few times. And so that's how the world economy was kind of kept going using those, that global action plan. You can Google up what came out later. But that's not what I'm going to talk about. I'm going to tell you a side story which is not widely known. So here I am. So I've been given this. I'll come back in a second. Give me a second. Why is my first guess always Shubdeep? Well, you're so much in love with him. What can I say? Apparently. Back up dragging path left. Clementine. नहीं ये ऐसे ही क्लेविटी देता रहता है क्या chat? Just do नहीं रात की रानी is really digging deep now. Okay, come on, you guys are being dick to her now. हाँ यार मैं तेरे को याद नहीं हूँ अभी मैं देख रहा हूँ आगे डोंट वरी हाँ रात की रानी have you seen Parth and Nagraj together in a chat? There you go. So yeah, I was gonna say that because you guys are being dick. When she guessed Parth, she guessed right. Simple as that. यार चैट में 3 ही तो रेगुलर मिलते हैं ट्रू job. I'm working like crazy. I'm negotiating with 20 countries. There's a complete chaos going on in the world. And we are creating this document. Cannot be a very long document because, these are basic protocols. And most of this is about economic, finance type things. Maybe some human movement, trade, etc. So this is coming together. We are now maybe in the end of April, so it's taken us 3 weeks to negotiate, etc. I receive suddenly from one of the important countries, I'll not name, the representative in my group from the G20, I receive a one-pager with 3-4 paragraphs which relate to health issues. Now, remember, the Framework Working Group is clearly an economic finance track. It has nothing to do with health. There is a health group. And right in the beginning, we were quite clear that we are not competent to do it, and this is the health thing is happening. Some other track should take. But one sheet of paper turned up from them saying that no, we should include this here. So I said, no, why are we including this here? We are not the competent group on health responses. There's a health track in G20. Let them do it. No, you see, it's too difficult. Anyway, this document will very quickly get accepted by finance ministers, governors, and ultimately by the heads of government. So it's a good place. Let's just put it in and, jaldi mein ho jayega. So, it sounded all very reasonable. Still, I said I'll read it. If nothing else, I'll edit the English. So when I read it, most of it is goody-goody stuff, which didn't mean anything, except for one paragraph, which sounded a bit odd. It basically stated that, today we don't have any vaccines, but in the future there will be vaccines. Because remember, this is April 2020, so nobody knows. Today we don't have any vaccines, but in the future there will be vaccines. Because remember, this is April 2020, so nobody knows pre-vaccine. And nobody knew at that time. And what was going. So someday there will be vaccines. When the vaccines happen, the world will have a problem that a few countries will have the vaccine and many countries will not. So we need, the world needs a protocol for distributing these vaccines reasonably. Now, audit me, but it still sounds reasonable, in the realm of something that sounds reasonable. Then it has another line, and that this job should be given to an organization. I don't understand. Why is that odd?
organization called CEPI based in Oslo or some such place. I thought this was rather odd because I had never heard of this institution. And in any case, if you want to give this to somebody, you should give it to some multilateral kind of way. Either working group of G20 does it, or even though WHO had performed horribly, still it's the correct platform to do it, or do some such place. Why is a private body called CEPI? Okay, that makes more sense. So I googled it up, and it's very interesting. It was basically a completely new private body, funded by some of the same USAID, Soros, these kinds of people. They, by the way, now removed all their sponsors from the website, so you can't see it, but you can still Google these things up. And this random body was supposed to do it. So I went back and said, sorry, how can we introduce it? We can't. So he said, no. And then, several ambassadors and high commissioners of major countries called me up to pressure me to try and have this in. Why are you being recalcitrant? I said, I don't know. But now, point is, if we had agreed to this, imagine what would have happened. We would have not been able to we had signed up to this. Then we would not be able to decide as a country where to distribute all this, our vaccines. There's some random organization called CEPI would decide. And so I began pushing back. So I then looked further into it. So he said, no, India is involved in this. So how is India involved in this? So I called, there was a joint secretary at that time called Love Agarwal, if I'm not mistaken. Very busy guy, I'm sure, at that point in time. Still, I called him and said, do you know anything about CEPI? I didn't know him at that time. But anyway, I called him up in the middle of all this chaos. I mean, it can be interesting based on where he's going with it. If he just falls flat, then he might just fall flat. Because he's setting something interesting up, that's for sure. Anything about CEPI. He also didn't know. Now I really began to get fishy. So he said, let me get back. So he got back and said, yes, there is an organization. I'm so happy with this mic. कि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा यार. उस mic में I just had to be here all the time and I will just be speaking like this, making sure मेरी audio ठीक आ रही है. उसके बाद भी है कि audio ठीक थी. Now I can just speak normally and it's still good. And मुझे context नहीं पता, to be honest. I don't want to know. Somebody people, it's not a governmental organization. We're not represented on it. So I went back and told these people who were pushing for this. So they said, no, India was involved in getting it going, this, that. We have Indians on the board. So I looked it up. There was indeed an Indian on their board, but not an official. In fact, I don't even know. I would not name the person. But this person came from a institution in South India, medical institution in South India, and which is not a government agency either. It's a Christian medical college, and who may or may not be Indian also. I don't know. They have an Indian name. But citizenship could be anything. And in any case, it's not an official representation. So how on earth does this completely private agency decide how the world's vaccines will be redistributed? So we came within an inch. Thank God I read this. But by the way, by this point, I was really suspicious. So I took this to Honorable FM Nirmala ji and said, ma'am, this is the thing. So he said, you do what you think is correct. She also thought. So I got her full backing. So once I had her backing, and then I went and I just refused. And so we kept that thing. It's not there in the thing. But I have kept all the papers for this. I have saved it because I think it's part of history. I think we need to write a book on this. Absolutely. This is clearly, the means through which information is controlled, and many of those who are powerful seek to control us and make us accept their power. Absolutely. So that's why we need to push back. Absolutely. So now coming back to NHS. So NFHS. No, thank you, BC. Let's see how long do you last today. My favorite part of the video, 30:46. All right, now I think we can move on. But actually, we are almost there. About many things in it. And I and the late Vivek Roy, who was sadly no more, he then encouraged me to dig deep. And then we wrote a bunch of articles about this in the newspapers about how donors are effectively getting and sort of guiding all this stuff. And so we began to write about it. I also wrote about how anemia data, for example, is deliberately collected in the wrong way. So that some pharma company can make money off. I don't know why they do it, but it's कितना खुश हो गया. Just made a connection right there, didn't you? It's a fact that they collect anemia data in a way that is well known to be the wrong way, which is by pinprick and capillary, rather than intravenously, which is the sensible way of doing it. Now, why would you do a nationwide survey for anemia, knowing fully well that is the wrong way of doing it? Which is it's not a new thing. It's well known that this is the way to do it. I'm so happy that you've taken up this issue. So now that we have taken it up, the good news is that the current NHFS that is being done purely by the Indian government, and I have to thank, of course, the political leadership, specifically Mansukh Mandavia ji, who was then there. And let me give you another example of this. So in case there's some people in the audience who think I'm paranoid and over exaggerating, let me give you an example of where this sort of social engineering has happened. So you all know that in India, since the 1970s and 80s, there has been a problem with gender selection, selective abortions. Yeah, this has led to a bias in the gender at birth, sex ratio at birth. Particularly in some states, ironically the richer states. Yeah. No, so here I will tell you, it's not about rich and poor. It's about where the location is. It happened to be at one point the richer state. So let me tell you a little bit about it. So it turns out that in the 1950s and 60s, there was a series of academic papers being written in Western universities which were paranoid about overpopulation. Yeah. And they were basically saying that there are countries like India, China, etc., that are breeding too fast. And it was very much a clearly racist thing. Okay, now since the Nazis, the term eugenics had become less usable. So now that entire discussion had now got couched as population control. Okay, and so there were these academic things, and one of the conclusions they arrived at was that, look, it doesn't matter how many men there are. Population growth depends on the number of women a population has, right? In theory, you can have one man and many women, population can still grow. The other way around does not work. So therefore, can we weaponize? There you go. That's about it. There you go. Good on you, man. Thanks for giving me a review. Son preference in countries like India and China in a way that you can then lead around does not work. So therefore, can we weaponize son preference in countries like India and China in a way that you can then lead to the gender ratio to be skewed? So with this in mind, there were these American think tanks funded by the way by Rockefeller and Ford Foundation, etc. And all of that I'm saying is well documented. So you can read all of what I'm saying and very well documented. What they began to do is they sent a bunch of sort of aid workers and intellectuals, etc., into India, and interestingly to China as well. And they convinced the governments of that time with this thing that, look, your population is growing up. Why don't we help you by introducing abortion so that now families can choose the kind of family they want? Now, it's not like they're doing this without knowing what would happen. So the first bunch of ultrasound machines that were imported into India were imported into India with Ford Foundation and Rockefeller Foundation funding.
the first few thousand sex selection abortions that happened in India happened in AIMS. Many of the doctors and the people, the women on which it was carried out, are still alive. And then, once this was got popularized, remember these people also have their hands into the entire medical system. So they began to get this popularizing various kinds of excessive measures. 1970s is also the time of Nazbandi and all this kind of. All of this kind of thinking was being driven by these Western NGOs who were infiltrating our system and doing social engineering. Now, then, of course, many of them, as you know, are based on Lodi Road. Now, if you look at the alignment of highways out of Delhi from that time, that is where the worst of all of this happened. That's why Western UP, Haryana, Punjab, Northern Rajasthan, that is where the gender ratios went because that is where these agencies could get into their white-colored utility vehicles and drive out to the countryside and spread the word. And this is how we ended up with this skewed gender ratio, of which later on, the same chaps came and blamed Indian culture and all kinds of other things. But it was they who deliberately... Wait, now, okay. Since he's saying it's all documented, so might be worth reading into that. However, he did clearly say that they had the plan, that is documented. They brought the ultrasound machines initially and it was funded by them. That is also documented. But he didn't necessarily point out how they influenced the masses towards this, towards the gender selection abortion, gender selective abortion, whatever you would want to call it. So is that also documented? Did it. And as I said, don't have to take my word on it. Because that's the main part. Otherwise, you're just basically giving the machine to do the deed. When he said, because the way he said here, hold on. AIMS, many of the doctors and the people, the women, by introducing abortion, so that now families can choose the kind of family they want. Now, it's not like they're doing this without knowing what would happen. See, because when he says it's not like they're doing this without knowing what would happen, it almost sounds like they're providing the ultrasound machines and they're like, oh, okay, this is how we can abort kara sakte hain, and they know कि लोग लड़कियां abort कराएंगे. So that's what it sounds like. It doesn't sound like there's this implicit manipulation going on. Now, so that sounds like giving the people a weapon and providing them, oh, by the way, you can also use it for something like that, So the first bunch of ultrasound machines driven by these Western NGOs who were... he said it's all documented. So this is an interesting read for sure, yes. It does not change the fact Joe... I don't like to use these buzzwords. Lekin jo the patriarchal structures that we've had since ages, so that has been all over the places, regardless of the cultural things. Anyways, chalo. So you're good, haha, if you're still here. What the fuck? Why do you even have haties? You mean haters? You're not even that big. Yeah. I used to have much more back in the day. You can take him on his word. Serious guy, not a retard, but definitely good research. Yup. But even if I am taking him on his word, he was very, very straight to the point about all of the things he said. So this is what they were doing, this is what they were doing. And then he went like, they introduced abortion, knowing what would happen. It's not like they didn't know. He said something like that. So that's like... Okay. Iska spelling issue hai. Can you end that south? Oh fuck! I'm so sorry, dude. Their hands and throw it at people. Miss Garrison, this isn't theory. It is scientific fact. What about the fact that by believing this crap, you're gonna go to hell? Doesn't that bother you a little? Actually, no, because I'm an atheist. Aha! I got you, you snake in the grass! I found you out! I never covered it up. And if I'm a monkey, then I might as well act like a monkey, huh? What on earth are you doing? Don't ask me. I'm a fucking monkey. Worth it. Fair enough. Richard Dawkins is just so annoying. इनके दो सर हैं. अब बोल साढ़े अर्पित. Yep, he's a busy guy, economic advisor to PM, very straightforward with his words. चलो guys, धन्यवाद stream join करने के लिए. That's my time, guys. I'll see you right here tomorrow.
सेम टाइम सेम जगह 11 बजे रात को। अगर सिद्धार्थ मीन्स हमारी चैट में आ गए तो चैट कैसे करेंगे? रियली फास्ट आई वुड इमेजिन। मेरे जैसा सैपलिंग मिस्टेक्स तो जा रहे अप्पा आउट, अप्पा गेटिंग आउट। ब्रेक पॉइंट का प्लान बनाओ यार। दीपक फकिंग डिस्ड, वरना हम दोनों खेल लेंगे। चलो see you guys, goodbye, thanks for joining the stream. By the way, I see on the chat, I see Parth, I see Hi and my T, I see Haha, I see 3 people, but it shows me that 7 people are watching. Why? And there are 4 likes, so you dickheads fucking like the stream. Okay, a couple of you probably slept as well. Am I that soothing of a guy? Am I really that good? Am I really that soothing? यार आई डू हैव वन फियर नाउ विद दिस न्यू माइक कि अब मैं कुछ खाऊंगा ना तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली आएगी। चलो एनीवेज गाइस थैंक्स फॉर जॉइनिंग स्ट्रीम, गुड बाय एंड गुड नाइट। And what did you mean I'm not even that big? I'm not even close to a little big. We're not talking about my deck because that's right. Chap गाय तू होगा। चलो see you guys. Thanks for joining the stream. Take care. See you tomorrow. Goodbye.